Let's welcome rank 31 Priyansha ma'am and rank 32 Nittin Singh sir. So this was Priyansha ma'am's 4th attempt. She's from Agra and her optional is public administration. Nittin sir is from Jammu and Kashmir and his optional is geography. First, ma'am will share her experience with you and then sir will share his experience. And then we'll have a combined Q&A session, so you can ask your queries from both of them. You can ask the particular person that my query is dedicated to this person, or you can ask an open-ended query and you can take the view of both of them. Okay? So let's have a huge round of applause for both of them again. I'm Priyansha Garg, rank 31 this year, and this was my 4th attempt. So I'll tell a brief introduction about myself. I'm from Agra, and I did my graduation in computer science engineering from Maharaja Agrasen Institute of Technology in Delhi. I graduated in 2018 and started preparing for civil services straight out of college. And I cleared my prelims in the very first attempt in 2019. Missed the mains cutoff by 19 marks, and then for 2 consecutive years in 2020 and in 2021, I couldn't clear prelims. So this was my 4th attempt, and a little detail about this attempt is that I cleared prelims not just for civils, but also for forest services. So your past failures don't determine your future. Then I cleared mains not just for civils but also for forest services with 2 new optionals in forest, and thankfully I could clear the whole process and secure rank 31. So I think what I would like to share with you is that when you start preparing, make sure that firstly you have a reason that why you are preparing for this exam, because the journey is in itself is very long and you need to constantly motivate yourself. So that reason should stick with you. Secondly, choose your optional very, very wisely, because your optional will make or break the game for you. Unless you score somewhere around 260 to 17, whatever optional you are choosing, it becomes very difficult to conclusively get a rank and get into your desired service. So let's talk about prelims first. So in my first attempt, I covered because I started preparing in 2018 after college and gave my prelims in 2019. So the strategy was very simple and it worked. And I think what caused 2 consecutive failures was that I tried to do a lot more. You need to stick to the basics. And this year, again, I went to the very basics. Keep your resources limited, the standard resource book that is there. Polity from Lakshmikant, Spectrum, then you have geography, NCRTs, economics, whichever source suits you. I use Sriram IAS economic notes. So covering those notes and keeping it, make sure that no matter how difficult the prelims paper is, there are always 25 to 30 questions that are very simple, and you should target those questions. Once you are done with those 30 questions, that makes 60 marks. And apart from that, the cutoff that is going, it's 88, 90. I think this year it will be much lower. So getting those 25 to next 25, 30 marks becomes very easy if you secure those low-hanging fruits. So all your preparation for prelims should be focused on that. And that can be done using a lot of mock test papers. And another very, very important thing is solving previous year UPSC prelims papers. And those papers should be done in a time-bound manner. You stimulate the environment, do it from 9:30 in the morning to 11:30. And keep analyzing those papers, because you need to develop a mindset about what UPSC is asking. See, mocks help you prepare about the recent events, but
mocks also complicates things. So keep those mocks just to build that knowledge base so that you don't get those static questions wrong, history ke questions ho gaye, polity ke questions ho gaye. But eventually, for those dynamic portions like science, tech, environment, you need to make sure that how UPSC thinks, where they are eliminating. कौन से ऑप्शन में only करके UPSC eliminate करता है, that knack needs to be developed, and that comes only with solving previous year UPSC questions. Another thing I like to share is how I used to attempt the paper. So I have a pen or something. So generally what we do is we attempt the paper in 3 portions. The strategy was not working for me. Keep the number of attempts high. Mine this year were 94 or 95 attempts. So I prefer more than 85 attempts at every cost. Then I used a very unique strategy from taking it from one of my friends, 25 questions in 25 minutes. So I divided the 100 questions in 4 sections. And because when you attempt your paper you attempt in the first round, you mark very short questions, and you come back to question number 1. You're actually forgetting what the question number 1 was. And when you are keeping your number of attempts very high, the probability of losing or missing on those questions is that you don't have to skip a lot of questions. You're very sure about this. Then the strategy works like anything. So you are attempting first question, second question, and when you're done with question number 25, you come back to question number 1. So all this time you are maintaining a pace. There's urgency. What happens is by the time we are completing the first round, we miss the urgency. So first round is taking 1 hour and we have attempted only 30 questions. So I think then 70 questions in 1 hour, it's a disproportionate attempt to attempt the paper. So do 25 questions in 25 minutes, miss 1 or 2 questions only, and then go back to the next 25, and whatever you are leaving, for example, you are leaving 10 or 12 questions, those can be attempted in the last moment, in the last 20 or 15 minutes, and keep filling up the bubble so your mind also gets the rest required. You are constantly thinking. So this was the way I used to attempt my prelims paper, and I think this helped me, incorporating whatever I'm thinking on the moment in those questions, and not disproportionately focus on one question or miss another portion which is easier towards the end. Then I think I'll talk about current affairs. So for current affairs, I thought that reading the paper and making notes out of it is a little bit skewed in terms of input and output ratio. So I used to use Current Affairs magazine for prelims and for mains. I use Vision IAS material, PT 365, Mains 365, and monthly magazines. And that saves a lot of time. Sir has a different approach with respect to this. I think he'll discuss about this. I think one thing that you can do is you can always read the Indian Express Explain section. UPSC is constantly asking those questions, and Explain gives a very good perspective, and especially the polity questions about the speaker or the vice president or the way the Lok Sabha secretariat is working. Those questions are not there in Lakshmikant, but they're there in the Explain section. So keep a tab on those portions as well. Then for mains, I don't know how much depth you want me to cover. So I'll start with answer writing. So I think you should practice answer writing from the very beginning. Don't try to stress too much. Write 2 answers daily. You can pick up questions from anywhere. They can be previous year questions. They can be daily questions various websites are posing. They can be used from any topper's copy you are referring. Take up 2 questions, write those answers, and refer back. So what happens is you improve on the way you are studying also when you are doing such exercises. So if you are reading a question on federalism, now when you read Lakshmikant, you'll have a understanding of how to approach federalism wala topic in Lakshmikant also, because you need to write down and you remember that you missed it. You couldn't jot it down on the paper. So I think answer writing should be a continuous habit, because
Another thing that I would like to tell about myself, that I have a very high mains written score of 868 this year. I don't know, my handwriting is coming out very bad. I don't have such a bad handwriting. And this is a very good score, and all my success is owed to this written score only. And that's why I emphasize on answer writing. Practice as much as you can, and practice as per previous year questions of UPSC. Keep the syllabus in front of you all the time so that you don't divert from different topics that you are reading. You can determine the scope of topics when you are referring to previous year question. For example, I'll tell you, when you are going through economics, GS3, you need to see that the UPSC syllabus specifies that government budgeting is a topic. So don't deviate or beat around the bush. Go and read the budgeting questions that they are asking, how they are asking, and prepare your notes accordingly. And that will, consolidate your studies and make sure that all your energy is invested in the right direction. So always keeping the syllabus in front of you and keep cross-referring the previous UPSC question. In fact, even an optional, whatever your optional is, always keep the syllabus in front of you, always refer previous year questions. That's indispensable for the preparation. Then make sure you prepare those topics for mains which are not covered during prelims. For example, internal security is there, then international relations is there, then disaster management, governance. These topics can be prepared from anywhere. You can use any coaching materials, static notes, you can use any topper static notes, or you can prepare your own notes. Keep Googling them and prepare those notes again with respect to the syllabus. Write the terms that are in the syllabus and keep making or building upon those, and try to make crisp notes so that you can revise the whole GS3 after GS2. After you have written the GS2 paper and you come back home, you should be able to revise your GS3 in just 2 or 3 hours. So that is about note making and answer writing. Again, I'll also give you something with respect to ethics. For ethics, because there is no standard book one can follow, after reading any basic text with respect to the syllabus, what I did was I prepared the definition of each and every term in the syllabus, examples on every term, plus a quotation on every term, and made sure that whenever I'm attempting a question, those examples, those quotations, those definitions, and those terms that are in the syllabus gets repeated in those answers. For example, if there is a question that an unexamined life is worth living, not worth living. So this is a quote that UPSC has given some years back. So I would make sure that I have very diverse examples. So I'll give a social example, political example, administrative example. So prepare these examples well before the paper, because otherwise you're thinking also, writing also, it becomes very tedious and you end up not completing the paper. Then how many hours one needs to study? Another dreaded question. As much as you can put in, which is quality effort. If you're sitting for 12 hours and you are effectively putting in 3 hours, it makes no sense. You are not there to show someone else how many hours you are studying. 6 hours of quality studies also helps. Mine used to be 7 to 8 hours almost daily. On bad days, it used to drop to 3 or 4 hours also. Everyone is human. And for prelims, I used to sit in 2 hours of sitting. So that is with respect to the paper. I'll sit for 2 hours, 2 hours, 2 hours, and 2 hours. And for mains, I used to bring it up to 3, 3, and 3. So this can be even less, but 3 hours of 2 sittings is important. And always, whenever you are writing your test, attempting previous year questions, try to do it in a time-bound manner. So try to write the test in the same time slot that UPSC writes. So you are attempting your test in 9 to 12, then 2 to 5. So that will keep your body clock synchronized with the exam. I don't think
being a night owl helps, especially if you're writing the prelims or the mains in that year. So keep your body clock synchronized. Then another thing I'll share is that because this exam is very unpredictable, it took me 4 attempts, it might have taken 4, 5, and I could have 6, and maybe I could not have cleared it. So don't try to latch your personal self-esteem to the exam. A lot of bright students, very intelligent, very hardworking, don't make it through. So keep a backup. Having a backup keeps your mental health very sound. Make sure that whenever you're putting in your effort into the exam, you are wholeheartedly preparing, and whenever there is a speck of doubt and you feel that now I have given everything, you have something to fall back upon. So having a backup takes out that unpredictable failure out of the exam. This is something I did not do, and I strongly feel that everyone should do it. Come after taking a job, after graduation, take a job, do it for 2-3 years. It helps you develop a certain sense of maturity. You can give your attempts till 32. There is no urgency that you need to clear it in 22. So have a backup, sound backup, which is very workable. Then be disciplined and consistent. Without putting everything every day. When you're preparing, if you're preparing for 1 year, if you're preparing for 2 years, you need to put in every ounce of hard work that you can. Because effectively, when you are not clearing the exam, it's only you who is getting impacted. It's your finances, your emotional, your mental health. So make sure that even when you are failing, you can tell yourself that I gave my best. There is nothing more I could have done, and now let's see what happens. Then last thing I'll say, then Nittin sir can come and share his journey, that believe in the process. God has great plans for each one of us, and the dots do connect eventually. And remember to take short breaks. Rejuvenate yourself. I took a break after prelims this year, after mains, after forest mains, after interview, and that helps you to come back and give it all. So if you're facing a certain amount of failure right now, if you're self-doubting, take 4 days off, 3 days off, go with your friends, party, have some alone time, meditate, read a book, pursue a hobby, do whatever you want, and then come back with more vigor. So I think that will help you. Thank you so much. So I'll share my score for public administration first. So in my first attempts, my paper 1 score was 78. Paper 2 was 139. This was the sole reason I couldn't clear mains. This year, my paper 1 score is 153, and paper 2 score is again 139. So I maintained this and almost doubled this. So I think for public administration, it's very important that you figure out the important topics in paper 1. So these are chapter 1, introduction, then there is thinkers, public policy, comparative public administration, developmental administration. I think these 5 topics are the major chunk of paper 1. Have good examples, have a good grasp of what the theory, each theory, for example, if there is PCA, sir, I can clear this. So if there is PCA or there is NPM, make sure that you have your terminology very, very crisply on your fingertips. So as soon as you see NPM, you need to make sure that there are 3 terms that will come is institutional pluralism, exit choice, and citizens as customers. I think these 3 terms should immediately pop in your head. So prepare these topics first, and the rest is just, very easy for public administration. And I think preparing for paper 2, paper 2 can be done. I used
Aribam for my basic understanding. And then I prepared my own notes from Google, Google searches. And ARC2. You can refer Anudeep sir's ARC notes. They are very, very good and very crisp also. And these can help in GS2 as well, ARC2 notes of Anudeep sir. So for paper 2, you prepare topic-wise examples from current topics. And if I think if it's with respect to the sources that I referred for paper 1 and paper 2, the doubt, then for paper 1, I used Vajiram's classroom course, classroom handwritten notes, and Mohit Bhattacharya, New Horizons, and Prasad and Prasad, no other textbook. And for paper 2, just Aribam as the basic source and building upon those basic notes more and more. One thing that I very much would like to tell you that from here to here, how it came, I used previous year toppers copies a lot. So what I used to do was that I'll open a previous year's toppers copy and I'll take that question, write it on my own, go back to what the topper has written and find those structural gaps. If my structure is missing, example is missing, my definition was not on point. So eventually, when I kept on repeating this practice, eventually I could stimulate the topper's exam answers, and this can be done in any optional if you are not able to score good. This is the best thing that can, be done. Because with the optional, I think there is no one giving you good previous year question model answers or someone who's checking your previous year question. So if you are even writing, you don't know whether you are writing it rightly or wrongly. So this guy has done it, or this girl has done it already for you. Copy those answers. Keep reading those answers, and eventually you will, come to a certain level where you can self-analyze your own answers that, okay, I missed this. I could have drawn a flowchart over here. I could have written an example over there. So I think that helps. So over to Nittin sir now. Good afternoon, everyone. And my name is Nittin Singh, and I hail from Kathua district in Jammu and Kashmir. And it's entering one district while you enter Jammu and Kashmir. So it's a gateway to Jammu and Kashmir. Hi. And I have done my graduation in computer science and engineering. And after that, I have come straight for UPSC preparation. And this year, it was my third attempt. And this year, I've got rank 32. And my optional was geography. So this was the basic intro. And I have prepared a timeline for you that how will I proceed. So first of all, let me tell you about scores that I've got this year. And the last year mains also I will tell you, and prelims also. So the first, these are the attempts. This is prelims, mains, and interview. First prelims I've got 87 something. Second I've got 108. And this year I got 112. And in mains it was not cleared. In mains here I've got 687. And this year I got 827 and 195. ठीक है, उसके बाद में आते हैं. This was the marks, and this is the scorecard that I've got for 3 years, and I can say that I've improved by hitting and trialing. And there was the one thing that I would share with you is your preparation should be very dynamic, and whenever you fail or you are not getting what you want, then you need to do the same thing in a different way. So it is the dynamicity that you should have
in your preparation, and your preparation should be conscious at every moment, like where am I going, what is required of me, and how am I doing, and it should be honest assessment of self. So this is something that you should keep with you throughout the preparation. Or this was something that I did. I honestly assessed my mistakes, and whatever I had to do, I did in the next attempt. And one thing I would say is consistency. This is an exam which requires academic performance, of course, but it requires very high level of maturity of how you handle various problems in life, various time management issues like we are almost all of us are living outside our homes. We are out of our comfort zone, and we need to bring that. We need to create that environment for us where we can perform optimally. So that is another task, and this preparation requires that you are staying outside of your home. You need to arrange for good food, good health, and good fruits. And this is something most of toppers don't talk. And I would say I had this habit that I used to eat fruits a lot during my entire preparation, and it helped me. Although I got dengue last year, but that is another issue. So this is an underrated statement. Do manage your health well, and it will help you a lot during preparation. A healthy mind, a healthy body breeds a healthy mind. So that was the basic introduction that I would say. And apart from that, I earlier said that consistency is what is most required, and we need to keep ourselves motivated. And it is not a matter of months. It takes 2 years minimum. And the basic or the most crucial element in preparation is your intrinsic motivation, and it needs not to come from, it should not come from outside sources like movies or someone saying that this, or something like in UP and Bihar they call bhokal of this and this. This is very superficial, and it is not what actually the services are. And the spirit is always of service and contribution to society. And I will assure you that it works. It is very cliched thing, and it is very, this thought is not that much entertained by many of the people, but it is what lies underneath these services. And it is a service after all. And we should be very mentally and our conscience should be very honest towards this aspect of this preparation. You are preparing yourself for some task that will happen once you get into services, and that task is service. And any knowledge that we gather during these services, one should keep in mind that how I will be utilizing that knowledge sometime later, after I clear exam, or even those like many of aspirants who don't clear, they still go on to do such wonderful things in life. And that was something they learned during preparation. And that was result of honest preparation. In fact, the syllabus of UPSC is made in such a way that you become a very well-educated person after going through it. So that was basic thing. And persistence, discipline is again another thing. And discipline is about completing your daily targets. You set a particular portion of your syllabus that it needs to be completed in this week or in this on certain number of days. And I'm sure almost 90% of times we will not be able to meet those targets. But still we would have done around 70 to 80% of that. And that is what we need to improve on daily. And this needs to be done on daily basis. So that requires discipline on your side. And मन मार के मन बांध के बैठना पड़ता है. That's the basic motivating factor. And about motivation, one thing was motivation doesn't lead to action. It is the other way around. And we feel कि यार आज कुछ it happens like a week or two you studied hard and you did all your daily targets, you completed them, but after that एक limbo सा आ जाता है and preparation stops. So that is the time when you are tested, your discipline is tested. You have to sit. अब उसमें efficiency नहीं बनती कोई बात नहीं, but still you have to sit and complete
डेली टारगेट्स, वो नहीं होता है उस दिन, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे पे वो बैकलॉग हो जाएगी, बट स्टिल करना है. तो दिस इज़ व्हाट डिसिप्लिन इज़ अबाउट, एंड motivation is about staying positive, and positive mindset is something which you can train, and it is not something that happens or that one gets from surroundings. Positive mindset आप consciously train कर सकते हो. I will talk about this during interview, that how I did that. But even during preparation also, you must stay positive, and it is not about a relative assessment. What I want to say is, when you sit for this exam, you will see a lot of qualified, a lot of people who have done so much extraordinarily in their fields. They are also sitting alongside you, and they will be competing with you. So I cannot see them and then decide that I will compete also. You will have some absolute assessment of your own self. You will see the syllabus, you see what are the requirements in prelims, in mains, and in interview. And they have written, for GS, they have said that the questions that will be asked, they can be answered by a well-educated man. They have used this well-educated person. They have used this term. So our focus should be in that direction. Ki yes, I can do it, and this syllabus, this assessment, whatever they have put forward, this seems to be doable, then I should do it. So this is the approach that you have to take, and this is something that will keep you apart from the rest of the people who are just seeing others and then deciding. So this is one of the basic things, persistence. And then we have stress management also, and it is an exam which is so stressful, and the preparation is so stressful, and the environment that we live, कभी broker तंग कर रहा है, कभी कोई issue हो गया है, कोई room में कोई problem हो गया है, AC खराब हो गया है, उसकी servicing नहीं हो रही है, तो मतलब these are the ancillary services जो आपके environment को create करती हैं जहाँ पे आपको पढ़ना है. तो उनमें इश्यूज होते हैं, उससे स्ट्रेस होता है. इवन स्टडीज़ में टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो स्ट्रेस है उसमें. देन अगेन स्ट्रेस भी स्ट्रेस लेने से ख़त्म नहीं होगा. यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग इन वॉट एवर स्मॉल वे वन स्टार्ट्स. तो जैसे जैसे हमें देखने को मिलेगा कि जैसे मैं कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर रहा हूँ तो स्ट्रेस अपने आप धीरे होने लगता है, कम होने लगता है. एंड दिस अगेन गोज कि मोटिवेशन डज नॉट लीड टू एक्शन, कि मैं मोटिवेटेड रहूँगा और मैं काम करूँगा, ऐसा नहीं होगा. मैं काम करना स्टार्ट करूँगा, धीरे धीरे कुछ अचीव होगा, छोटे छोटे टारगेट्स होंगे, उससे मोटिवेशन और बढ़ता जाएगा. और these are the basic insights that I thought I should share before going into details. Or then let us come to prelims. As you have seen, I took 3 prelims, and first I couldn't clear the first one. And the main reason for the first one was a lack of practice. I did not practice enough mock tests. And I had taken Abhyas test series for the first prelims, but I did not solve it, sincerely. So that was the cost that I had to give. And from that attempt, the learning was one should do mock tests. First of all, you must be very confident in your static portion, that you have studied the syllabus that you need to study, and then the current affairs also. Then you can go for mock tests. You have to go for mock tests. And mock test is not just giving answer and seeing your marks. It is analyzing that test afterwards. And each and every question must be analyzed, even those that you have got right. You have to see whether the logic was right and what I did was right or wrong. And then you don't need to cram those answers and those to mind, learn them by heart. You just need to read them and read them with understanding. And it requires, it takes around 4 hours. I have done it. And 4 to 5 hours also. Sometimes अगर बीच में break हो जाता है कुछ, आपकी concentration टूट जाती है, it takes 5 hours also. But that is worth the effort. And this thing you can do for at least 20 mock tests. I know the test series is around 34 to 35, but you can be selective कि environment में ज़्यादा पूछना है तो I will take 3 mock tests from environment.
पॉलिटी के मेरे को 2 ठीक हैं, इट इज़ वेरी बेसिक एंड ऑल. उसके बाद हिस्ट्री का अगर मॉडर्न मुझे लगता है कि यहाँ से मेरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए मॉक टेस्ट से, तो मैं मॉडर्न ज़्यादा ले लूँगा, आर्ट एंड कल्चर ले लूँगा. इस तरह से यू कैन टेक दीज मॉक टेस्ट, एनालाइज देम. And about the strategy that she was saying, how to attempt questions while you are attempting prelims, it is about you see, and one thing also I wanted to give a disclaimer earlier, that every one of us has done it in our own way, and mine and hers preparation will be very different, and you will see, you will realize कि यार ये कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. तो it is not supposed to confuse you. It is just the truth, and you should realize कि someone has done in this way, he has done in this way, or she has done that, but you will have to find a way that works for you. So what we share is our suggestions, our preparation strategy. You need to find a new strategy of your own, and you can take learnings from ours. So that's the main objective here. So what she was saying about how to attempt prelims, that she did in different 25 questions. What I did was, and this is a strategy that I came up while solving mock tests. When you solve mock tests, you do that in a time-bound manner and with all discipline, whatever required. Even fill the OMR sheets after you have written. It brings practice in your attempting the prelims. So what I ultimately developed was, I went in a first attempt, I attempted around 80 to 83 questions. In both the attempts when I cleared prelims. In the first attempt itself, I cleared more than 80. And those in which I was doubtful, I encircled those questions and came back on them in the second iteration. So in the first attempt, I attempted around 83 or 84 questions. Then I attempted in 96 and then in 99. So this was again one learning, that you should try to increase your attempts, the number of questions you attempt in prelims. And there are some basic around 30 questions which are very easy and straight from your static portion. You should not do any mistakes in them. और अगर उसमें कोई mistake होती है, then you are losing edge with others. तो वो एकदम सही होने चाहिए. उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक कैलकुलेटेड गेस होना चाहिए. और एग्ज़ाम इस तरह का हो गया है अभी कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ गई है, और कट ऑफ जो है वो फिर भी अभी भी, इनफैक्ट इवन फॉर दिस ऑल्सो पीपल से दैट इट विल फॉल कंसिडरेबली, बट आई डोंट थिंक सो इट विल गो बिलो 85. तो क्योंकि देर आर पीपल हु विल बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस and they will get into the for mains, they will get to write mains. So you will have to increase your attempts. This was my learning, and I know some people they have attempted very few questions but still they get into services, but that's their own way of doing. So this is the way that you develop during your mock test practice. You will develop this way, a way of your own, and that you have to do on the day of prelims. So prelims is about preparation, and then on the day what you do, that also needs to be prepared. So that was prelims. The main study material that I had for prelims was the static portion should be complete. It should be revised multiply. Even if it's your first attempt, don't fret upon it that I have not revised multiply. But over the period, you will have to give, many of us do give more than one attempts. So till then, we will have revised our syllabus around 5 to 6 times, the static portion. So this much revision is required. And for static, I think teachers will be sharing the standard books. So I would still say some little bit on that. The standard books are dependable, and they must be done for history. The old NCERTs, R. S. Sharma, Bipin Chandra, and this Satish Chandra. You want to me go on detail on that, or we can discuss? For ancient art and culture, I had an R. S. Sharma, and I had made notes from that. I will share my notes with you as well. I have brought those notes, and sir, if you can bring my notes, I have kept them on my sofa over there. आप ला सकते हैं उसमें, पूछ लीजिएगा आप उनको.
तो स्टैंडर्ड जो R.S. शर्मा है उसको पढ़ना है, what it says, and because history is not just about facts, history is about chronology and contextual events. What happened at that point of time, then what happened later. Like in ancient India, how we moved from this Paleolithic, Neolithic, and then modern day settlements, early Vedic and later post-Mauryan, and then Kushans, then Shakas were also at that time. Then how, in which region of India they were. तो ये एक जो बेसिक क्रोनोलॉजी है उस बुक में है, और जो भी आपको इसको सप्लीमेंट करना है देन इट गेट्स सप्लीमेंटेड फ्रॉम योर मॉक टेस्ट. मॉक में आप उसको पढ़िए तो आपको लगेगा कि यार ये वैलिड पॉइंट है. लाइक फॉर एग्जांपल अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर देयर, दे टॉक अबाउट दैट. तो उसको आप ऐड कर सकते हो अपने जो स्टैटिक पोर्शन के जो नोट्स हैं. हिस्ट्री इज़ दैट आफ्टर मतलब एंशियंट हिस्ट्री इज़ दैट आफ्टर फॉर मिडीवल व्हाट आई डिड वाज आई डिड ए basic reading with understanding of Satish Chandra. Basic reading, just to get to know how things work. Then I made notes for those chapters which were related to socio-economic conditions and administrative structure of those times. So there are 3 era in medieval times. First is the Rajput dynasties which were fighting amongst them. And after that we have the Delhi Sultanate period. And after that we have the Mughal administration. Of these 3, I had socio-economic conditions and administrative structure and notes for that. And these chapters are there in Satish Chandra special, as they are separate chapters. So I had made notes for that, and for medieval it was enough. One thing I did was about the Vijayanagara kingdom. It is in this modern themes of Indian history. We have a very complete detailed chapter on Vijayanagara kingdom. So you can add certain small snippets of notes from there. After that, for modern, I did was this Bipin Chandra, and that was the only source of modern history for me. And apart from that, class notes, basic class notes are always, they are with every subject, whatever class notes you have. And then supplemented them with these mock tests, whatever knowledge they give in mock tests. So such kind of approach you can go, like standard books and supplement it. Standard books are the most reliable source of information for any, and everyone knows what are the standard books. For geography, 11th and 12th, NCERT plus GC Leong, and moreover I had geography optional as well. तो मेरे को वहाँ से geography का cover हो जाता था. But still, for GS I think 11th and 12th and GC Leong is more than enough. Then for Polity, Lakshmikant is one of the best compilations that we have in the market right now. Then for environment, this was one book. There was Shankar IAS book, and apart from that, economy basic class notes. This is for the static portion that I'm saying, and rest is और क्या ही बचा है? Economy, polity, geography. SNT के लिए basic class notes. And now coming to current affairs, what I did was I read newspaper daily. And a significant amount of time I had given to newspapers, from 2 to 3 hours, and it is worth investing so much time, that I would say. I had felt so. Newspaper is not just current affairs. Newspaper is about comprehension. It is about current affairs. It is about logical sentence making, critical analysis of any topic, and it is about vocabulary plus essay paper, examples. So these are the things that I have learned from newspaper. And many of my contemporaries, they say that they have done newspaper, and some say they don't do that much. But it depends on you whether it suits to you or not. I can share what worked for me, and newspaper have helped a lot. And what it brings with you is what happened was, when I began writing answers for this mains, I did not need to revise the static syllabus again and again. The reason was the questions that they asked, they are very dynamic questions. And
mains is more current affairs oriented than prelims, that you will get to know once you go through PYQs. So I could write any on any topic, and the reason for that was because sometime I must have read about that on newspaper. तो आपको कुछ ना कुछ बोलने के लिए कुछ होता है, and the range is from medical sciences to arts to polity. Any topic you can write a little bit that is required from a well-educated person, and that is from newspaper. So for current affairs, I did daily reading of newspaper. You can underline important points, you can encircle important points or some data, but you don't need to make notes out of newspaper. Just read with understanding, a genuine reading. And after that, how I managed for notes was, I went for yearly compilations of PT 365, and that I read just 2 months before prelims. तो उससे क्या होता था कि जो पूरे साल भर के करंट अफेयर्स मैंने पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं उसमें रिवाइज हो जाते थे. तो what I did was I had organic understanding of current affairs, whatever is going on due to newspaper reading, and I had ready-made notes that were available in the market in the form of PT 365. तो उससे वो रिवाइज हो जाता था. अब PT में क्या है कि when they talk about environment, they talk about conceptual things also. तो it also, your concepts are also getting revised. तो करंट अफेयर्स मैंने वहीं से किया था, एंड आई पर्सनली फील कि करंट अफेयर्स इज सो मच ओवररेटेड इन दिस इंडस्ट्री, whatever it is, in this preparation environment. So focus on revision of static, be very strong in static, and current affairs, you should have genuine awareness about whatever is going around. And Hindu and Indian Express both are equally good newspapers. And that was what I did for current affairs. And mock tests, after that you go for mock tests. And ideal time I would say is, for example, if I'm to appear for the next year, then after December I should start looking for 1 or 2 mock tests in a week or 2 weeks, a single mock test. So after that you can start on like attempting mocks and analyzing them. And about CSAT, it is very common to say that yaar GS ho gaya, CSAT reh gaya. So it is very stupid as well to say so, because they have not said ki CSAT is just another paper. It is also of qualifying nature, and GS is also of qualifying nature. So we must be prepared for CSAT. It is an equal part of the exam, and this is what I have been saying. You form a strategy of your own that you have for CSAT, and if you feel that I'm not that much comfortable in mathematics, solve mathematical questions. And PYQ questions, these are very good. They will give you best idea that how much level UPSC is demanding and what kind of questions they put up. So CSAT को prepare करना है dedicatedly. It should not be relegated to any secondary paper only. It is one of the primary papers. तो CSAT के बारे में रोना छोड़ के we shall, मतलब it should become, and I think now onwards it will become one of the primary papers to focus on. So for CSAT is that. Then coming to mains, what I did was, you can see this jump almost 140. It's exactly 140 marks a jump for mains, and the reason was that in the first attempt I could not clear prelims. In the second I couldn't clear mains. The reason was I was too much focused on prelims in the second attempt, and my entire preparation was diverted to such kind of questions, to range of questions. I had depth of knowledge as well, but I didn't focus on structuring of answers. And one of the side effects of prelims is that whenever that we know a lot of things, lot of facts, lot of knowledge we know, but whenever question is asked in mains, we tend to write what we know. We don't address the demand of the question. So this was something that I learned in after second attempt, that for any question, and in mains we have 10 markers and 15 markers. The 15 markers are the most scoring ones because of the because they have themselves explained the question for us due to longer question. So we can just break the question into smaller parts, address each part, and in a way we would have addressed the entire question. Like it is breaking your problem into smaller problems and addressing small problem. And this is the main approach for any answer
whether it's optional or whether it's GS, and even whether it's your essay. So this is something you learn while answer writing practice. And when to start answer writing is, then again, as she has said earlier, that you can start right from the beginning. But what I did was I started quite late, and I had to pay for that. But again, I see it is not very possible to start in the beginning. We don't know actually what to write. So there is kind of inhibition in us, like what do I need to write? I'm not preparing well to write answers. तो हमारी preparation क्या हो जाती है, वो सिर्फ एक आंसर को prepare करने लगती है फिर. We kind of lose holistic perspective. तो my preparation was, जब आप prelims आप dedicatedly prepare कर सकते हैं around 2 or 2.5 months before the actual prelims. उससे पहले you have this hybrid mode of preparation. आप मेंस के आंसर्स भी लिखते हैं, मेंस का सिलेबस जैसे GS4 है वो दैट इज़ टिपिकली फॉर मेंस ओनली, तो आप वो भी पढ़ते हैं उस टाइम पे. उस दौरान आप कुछ आंसर्स लिख सकते हैं. बट व्हेन वी गेट टू दिस पॉइंट आफ्टर प्रीलिम्स, व्हाट यू डू इज़ यू इमीडिएटली, लाइक आफ्टर a day or two, you get your answers checked by any dependable answer की, एंड देख लो कि यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और ये करना होता है फास्ट, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, क्योंकि देन यू आर लूजिंग प्रेशियस टाइम. और जब आपको पता चल जाता है कि यहाँ मैं मेंस लिखूंगा, इफ़ इट इज़ मोर देन 100, ऑब्वियसली आई एम राइटिंग मेंस दिस ईयर, तो गेट ऑन विद द मेंस. और उस टाइम पे गो ऑन फॉर एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग. व्हाट आई डिड वाज, in the third attempt, like this is my question, a small intro, उसके बाद एक सब सेक्शन जो इस क्वेश्चन का इधर कहीं होगा. मतलब ये वो चीज जो सब सेक्शंस हैं, हाउ टू ब्रेक क्वेश्चंस इनटू सब सेक्शंस, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज ट्रेन्ड. दिस इज नॉट समथिंग you will get by direct reading. You will practice and you see how to break the question into smaller questions. And जो एक सब सेक्शन ये होगा उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, फिर एक सब सेक्शन होगा उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, फिर आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं यहाँ पे वे फॉरवर्ड के साथ. तो ये जो सब सेक्शंस हैं, चॉइस ऑफ सब सेक्शंस डिमांड्स योर कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि हाँ मुझे समझ आ गया क्वेश्चन क्या करना है. और जब एक लॉजिकल फ्लो होगा कि इस सब सेक्शन के बाद यही सब सेक्शन आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर टू डिस्कस अबाउट इंडियाज, लेट अस से India's foray into renewable energies. So my first intro would be whatever we are doing in budget. We are allocating so many funds. Then we are also promoting innovative technologies in renewables. We can go with an intro, that intro. Then first subsection should be like what is the need for that. I need to justify my India's foray into that. It is a very small subsection. In fact, we can blend it with intro as well. But what is the need? Then what is being done? That should be the next subsection. Then what are challenges? And then what is the way forward? It is a logical flow, or it addresses the demand of the question as well. Let me take one another example, which is there was one question which I remember was it was one of the test series. The Indian literature has been the result of secular as well as religious literature, and comment on that. So it was one thing you should be aware of, that is where that question is asked. If this question is asked in this GS1, then I need to keep in mind the ancient, the medieval and the modern, because this is what they talk about. So I will go from there. How Indian literature over the centuries has been contributed by secular and religious. तो इसमें मेरे को उनको examples नहीं बतानी है कि this is secular literature, this is religious literature. I need to show that link, how it is contributing to Indian literature as a whole. तो जैसे Buddhist literature है, how it उसकी कोई example दे दूंगा मैं. For example, the Jataka tales, they are very religious in origin, but they have cultural elements. They show secular events, and they have also been one of the cause for Panchtantra, which was written way later. So it shows how Indian literature evolved over a period of time, and it was a result of some religious element. Then we have the secular elements as well, where we have for example this Panini's Ashtadhyayi,
and how it has been one of the most dominant grammar sources for Sanskrit even till today. After that, Maharshi Patanjali wrote, and then we have further literates of the medieval era. तो इन एग्जाम्पल्स को लिंक करना है आंसर्स के साथ. प्रीलिम्स में हम सिर्फ एग्जाम्पल्स दे देते हैं क्योंकि हमारे पास वो इनऑर्गेनिक वे में आंसर होता है. तो मेंस में हम ये लर्न करते हैं कि हाउ टू एड्रेस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और उस पर फोकस करना है. तो दिस इज अबाउट मेंस. एंड देन अगेन फॉर टेस्ट सीरीज एनालिसिस फॉर मेंस इज जैसे ये क्वेश्चन है मेंस टेस्ट सीरीज. फर्स्ट अटैम्प्ट होता है कि व्हेन आई गो फॉर एक्चुअल एग्ज़ाम, जिस दिन मैं वो मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिखता हूँ, तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट है. सेकंड अटैम्प्ट है कि अब वो चेक होकर के आ चुकी है आपके पास कॉपी. यू सी देयर रिमार्क्स व्हाट दे हैव सेड एंड you should go for any good mains test series whatever is there in the market. But how to do that is, फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने अटैम्प्ट किया, उसको उन्होंने चेक करके दिया, उस पर साथ में उसके रिमार्क्स होते हैं, उनको एनालाइज करना है. रिमार्क्स प्लस उनका एक मॉडल आंसर होता है, प्लस यू कैन गो फॉर टॉपर्स. ये मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, मगर क्योंकि यू हैव टू फाइंड योर ओन वे ऑफ राइटिंग आंसर्स. टॉपर्स की यू कैन सी व्हाट एक्चुअली पीपल आर डूइंग, यू विल हैव एन आइडिया कि मार्केट में चल क्या रहा है. और एक अच्छा, जैसे दोज हु हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन मेंस गो फॉर देयर दिस टेस्ट आंसर्स, यू विल गेट टू सी कि यार कितना लिख रहे हैं बच्चे एंड हाउ दे आर मैनेजिंग 10 मार्कर्स एंड 15 मार्कर्स. थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, एक दो बार देख लो, उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है. देन यू गो फॉर देयर रिमार्क्स, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कमी है मेरे में और क्या पॉजिटिव्स हैं. देन गो फॉर देयर मॉडल आंसर एंड देन राइट अगेन. This is something that I did for my mains this year, and this writing again part I did 4 to 5 times for one question in the initial period. क्योंकि you get to know कि यार मैंने लिख तो दिया है, बट यार वो आई नहीं, बात नहीं बनी, जो मेरे अंदर बात थी, जो मैं कहना चाहता था, वो आया नहीं अभी पेपर पे. You will feel this. तो आप फिर से एक बार राइट करो उसको, समझ रहे हो आप इस चीज़ को. दिस यू कैन डू इन द बिगिनिंग फॉर द बिगिनिंग आंसर्स. और in this way this is almost 3 revisions, 3 analysis of single question. You will get to know कि अच्छा ये अब होता क्या है. Now at this current stage what I can do is I simply read that question and that breakup of sub parts, it comes directly to me कि हाँ ऐसे ऐसे एड्रेस कर दूंगा इसको और आंसर ये एड्रेस हो जाएगा. तो this should happen with you on the day of the exam, on the day of the exam of mains. तो उस दिन जब आपको ये ब्रेकअप होने लगेगा और लॉजिकल फ्लो बन जाएगा तो इट विल हेल्प. और ये काम, ये टीडियस काम है, बहुत ज़्यादा टीडियस काम है. Even in the mock test, 4 to 5 hours were being consumed by single test for prelims. This also will take a lot of time, but it is worth it. Rather than going for more answer writing and more answers, stick to one single test series, solve those answers multiply. और हर जो आंसर आप दूसरी बार लिखोगे, it should be an improvement over the first one. तो उस वे में आंसर राइटिंग आपकी एड्रेस हो जाएगी. एंड और आंसर राइटिंग की एक बड़ी सुंदर चीज़ है कि once you have put in that much effort ना, it will give you returns surely. जबकि प्रीलिम्स में ये भी डाइसी रहता है. तो आंसर राइटिंग तक आप एक बार पहुंच जाते हैं, आप मेंस पे पहुंच जाते हैं. एक्सटेंसिवली फोकस ऑन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड गो फॉर द एग्जाम. दिस इज़ फॉर मेंस. एंड देन इंटरव्यू के लिए भी बोल दूँ ना, फॉर इंटरव्यू ऑल्सो what they are looking, again you read one thing also, multiple readings of syllabus. जो यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया है हमें, आप उसको प्रिंट करवा के रख लो. चिपकाने नहीं है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि उसका फॉन्ट साइज इतना है नहीं कि मैं दूर से देख सकूं दीवार पे लगा हो. यू शुड हैव दैट कॉपी विद यू ऑन योर टेबल. और क्रैम या उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. मैं नहीं सजेस्ट कि यू शुड लर्न इट बाय हार्ट. इफ़ दैट वन इज़ विलिंग टू डू दैट, वन शुड डू. बट व्हाट आई डिड वाज आई हैड मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ दैट. एक हफ्ता अच्छा हाँ फिर से पढ़ लिया, फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर से देखा, पढ़ा हुआ है, फिर से पढ़ लिया कि क्या है क्या है. इससे आपके माइंड में उसका आइडिया रहता है कि व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड,
तो जब इस तरह का माइंडसेट होगा, यू विल व्यू न्यूज़पेपर विद अ डिफरेंट लाइट, यू विल व्यू योर आंसर्स विद अ डिफरेंट लाइट, और जो आपके टेस्ट सीरीज़ हैं उसके भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाला जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख ले तो दैट यू शुड डू। तो उसमें एक लिखा हुआ है कि फॉर इंटरव्यू ऑल्सो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज़ a genuine person, basic understanding, basic interpersonal skills should be there, basic communication skills, and he should be genuine. They have written this in most simplest words. उसको बार बार भी तो मेरे को भूल गया, एक स्पेसिफिक टर्म भूल गई उसकी, उनको आप बार बार पढ़ो और उसका डिक्शनरी मीनिंग देख लो वर्ड का क्या है. It will give you best idea what interview demands. Or what I found, like I had given a lot of mock tests as well. That is also again a personal choice, whether to give multiple mock tests for interview or not. But I found कि it helps if you had given some, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक बन जाता है जब आपके जो डैफ है उससे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो उसका एक क्वेश्चन बैंक होता है. और उसके अलावा क्या होता था, मेरे साथ क्या होता था कि जब जैसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने और वो मैं पहली बार क्वेश्चन सुन रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैंने कुछ जवाब दिया. जब इंटरव्यू हो गया तब भी ओवर, तो बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा है वो क्वेश्चन, तो आपको लगता है कि यार इसका मैं ये जवाब दे सकता था या फिर इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. तो ये जो चीज़ है, अगर हमने फेस किया हो क्वेश्चन तो वो रिफाइन करता रहता है हमारे आंसर्स को. तो इसलिए मॉक टेस्ट फॉर इंटरव्यू हेल्प्स. उसमें एक जेन्युइन कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर. यू डोंट नीड टू ब्लफ इन द इंटरव्यू कि यार मैं बहुत ही 30 मार्क आनूँ, वो नहीं चलता है वहाँ पे, क्योंकि दे विल आस्क सम क्वेश्चन और वो हो जाएगा वहीं पे. तो वन शुड बी वेरी जेन्युइन एंड कॉन्फिडेंट इन वन सेल्फ, वन वट एवर ही इज़, वट एवर शी इज़. और डाइवर्स पर्सनैलिटी अगर किसी की हो तो इट हेल्प्स. डाइवर्स इन द सेंस यू आर एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आप एक्टिव हो थोड़े, उसके अलावा यू आर डीप थिंकर एज वेल एज यू आर थिंकिंग अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स. अगर वो आपकी हॉबीज़ में से दिखता है, आपकी इंटरेस्ट में से दिखता है, तो इट हेल्प्स. डैफ इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली. और अपने रीजन को लेकर के प्रिपेयर रखना होता है. अपने जो पास्ट कोई भी काम है, ग्रेजुएशन किस में है, जॉब किस में है, तो उसको लेकर के वन शुड बी अवेयर. और फॉर एग्जाम्पल आई डिड दिस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन ग्रेजुएशन. तो he asked me question how AI helps in this modern medical field. तो I gave him answer कि यार AI ऐसे ऐसे हेल्प करता है, टेलीमेडिसिन, स्क्रीनिंग वीनिंग हो जाएगा. Then he asked कि करता कैसे है. Like don't give me a GS answer, give me an answer who is from computer science and math. तो I could tell him कि this is how these क्या कहते हैं, there are various techniques, machine learning and supervised and unsupervised learning and all. तो उसके बेसिस पे हम कैसे वेक्टर्स बनाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी पर्टिकुलर कोई भी पिक्चर अगर है, कोई डायग्नोसिस है, उसको कैसे डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं. तो आई कुड टेल हिम. तो इतना सा थोड़ा हल्का हल्का नॉलेज होना चाहिए अपने फील्ड का, एंड इट शुड वर्क फॉर इंटरव्यू. और वन थिंग दैट आई टोल्ड अर्लियर कि यू कैन ट्रेन योर माइंड एंड इट इज़ द बेस्ट वे एंड बेस्ट थिंग फॉर ह्यूमन्स. That we can train our mind for any contingency. Or positive mindset, a motivated mindset, it is again a part of training, how you train yourself. So on the day of the exam, while I was sitting outside waiting in the hall, we have this central hall where everyone sits, और वहाँ से आपको बुलाते हैं whenever we have to go for interview. तो in that hall, and this training, it is not something कि ये बड़ी देर से आती है. On the spot you can start training your mind. So there is a poem written, she might have also seen ki Rabindranath's poem is there in the hall. It is where the mind is free and head is held high, where the knowledge flows freely. So it is very like long poem, and he has written what India should look like after independence. So it is one of the best imaginations, and when a person reads it, you are filled with so much positivity. And look at the brilliance of the UPSC that it has placed that poem in that hall when a candidate is waiting for interview. So on that very day, my respect for UPSC as an institution grew very much, and they do value merit. This is one of the best things UPSC had, and they will
ensure, the process will ensure that if you are up to that level, you have trained yourself enough, you will get to the end and you will get what you are looking for. But still again, I am very grateful, and it is not that I was going to get. But as an institution, UPSC has established that it will select worthy people. So when you respect an institution, your preparation for that institution also changes qualitatively. And try to appreciate that thing that UPSC does. And also, although it can be very frustrating at times and the kind of questions that they have asked, but then again, it is for everyone, and the kind of unpredictability, it is again for everyone. What we can do is we can prepare ourselves in a best way and in the best manner that we feel is suitable for the exam. And we can hope for the best outcome. So I think I should end. Optional na? Optional भी यार लंबा खींच दिया मैंने. Optional, I will share marks as well. In geography, the first mains I wrote, for geography optional, the best thing is you should know the syllabus. And they have written a very detailed and very long syllabus for geography optional. Each term should be known to you. ये बहुत ज़्यादा extensive है, बहुत ज़्यादा tough हो जाता है geography का syllabus cover करना. In that scenario, you can prioritize some sections which are being asked in the PYQs. और अभी क्या चल रहा है कि पिछले कुछ सालों से डायनेमिक सा पेपर है. They are not getting that much into geographical technicality, but they are asking questions of general relevance like landslides in Himalayas, GLOFs हो गया, जहाँ फिर the climate change related issues. तो इनको tackle कैसे करना है? You should be thorough with your syllabus, revision, multiple revisions. That is the basic foundation. After that, go for test series and analyze your answers. Paper 1 is relatively easy to do when you are thorough with the subject. But paper 2, what it requires is, you see, every subject has an essence. And I was talking earlier to director sir also, that essence of geography as a subject is synthesis. It synthesizes different fields of human education, different fields of our environment, different sciences also. It synthesizes every other field, and it provides a holistic synthesized aspect of any region. So regional synthesis is foundation of geography as a subject. It is the philosophy of a subject. In paper 2, if I can show or I can reflect this in our answers, in my answers, then it works best. And that was the reason for my jump in marks in paper 2. In first attempt, I did what was being told in lot of coaching and in lot of test series. They tell you that you have to follow this certain type of answer structure. But they are missing that thing, that essence has to be shown. And for geography optionals, it is very relevant that 6th to 10th NCRTs, old NCRTs that were written way back, just give a read to any particular. They have talked about continents. For example, when they talk about Australia, so the chapter on Australia as a continent, they will synthesize everything, and the way it is written. For example, they will talk about physiography first, the kind of oceans, mountain ranges, deserts and all. Then they will talk about its climate. Then they will synthesize it, how physiography is being affected by climate, and climate in turn affects physiography of a region. Then they will talk about the cultural aspects of the people who live there. Aborigines that were living earlier, now the new settlements, the immigrants that were there. Then they will talk about their occupation, how it is being affected by the local and geographical conditions. Then they will talk about infrastructure, how it is leading to further economic development, economy of the region. And then they will give this holistic synthesized view of a region. So this is geography, geography in a gist. And the very definition of geography is the study of earth as a home of man. This GS students are also introduced to this definition.
and this is one of the most matlab smallest and most comprehensive definitions that we could have till now, and it was given way back during times of Socrates or Aristotle, something like that. Eratosthenes, he was this man thinker who was the first geographical thinker. तो वो चीज़ अगर आंसर्स में झलके, अब वो आंसर्स में कैसे झलकी कि for example, if in paper 2 I am being asked this mineral distribution of southern Deccan region of India, comment on this, in 10 marker question है, तो इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल दिस डेक्कन रीजन, डेक्कन लावा प्लेटू नॉर्दर्न रीजन में है. सदर्न रीजन में वी हैव एक्सपोज्ड शील्ड्स, क्रेटोनिक शील्ड्स हैं विच आर बीइंग एक्सपोज्ड, और उनकी जो डेन्यूडेशन है उसकी वजह से जो मिनरल्स हैं दैट आर देयर. तो अब इसको मैं एक रीजनल मैप के साथ इंट्रोड्यूस करूँगा. रीजनल मैप फॉर एग्जांपल छोटा सा एक मैप बना देंगे. ये कर्नाटका रीजन का मैप है. यहाँ पर छोटी चिक्कमंगलुरु, चित्रदुर्ग, बेलरी, होस्पेट, हसन, ऊपर बीदर वगैरह, दीज आर द सिटीज़ विच आर डोमिनेंट इन ओर माइनिंग एंड ऑल. और यहाँ पर अगर कोई छोटी सी माइंस हैं, केमानगुंडी माइंस हैं, कौन सा वाला, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, एक जैसे भद्र रिजर्वायर है. तो एक छोटे से मैप में ये सब डिपिक्ट कर दिया. और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दूंगा कि शील्ड्स हैं, एक्सपोज शील्ड्स हैं, आयरन और मोस्ट डोमिनेंट है और वेरी हाई क्वालिटी आयरन और है, मगर यहाँ पे कोल नहीं है. तो अ लॉट ऑफ आयरन और इज़ डायरेक्टली बीइंग एक्सपोर्टेड. उसके बाद जो कोकिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, एंड दैट कम्स फ्रॉम भद्र रिजर्वायर. और जो मेजर इकोनॉमी ऑफ द रीजन है दैट इज़ इंडस्ट्रियल, ड्यू टू दिस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर हेयर. तो अब ये मैंने उस लेवल की सिंथेसिस तो नहीं की है, मगर एक छोटी सी सिंथेसिस है, रीजनल एरिया है, क्वेश्चन के रेलेवेंट है, और उसकी इकोनॉमी को थोड़ा सा ऐड कर दिया उसके मिनरल बेस के साथ. ये एक केस स्टडी है जिसको हम ज्योग्राफी में बोलते हैं केस स्टडीज़. फॉर पेपर 2 यू शुड कोट वेरियस केस स्टडीज़ एंड ऑल्सो शुड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट केस स्टडीज़ ऑन द स्पॉट. ये ज्योग्राफी में हेल्प करता है. आपके पास बहुत सारा नॉलेज होता है. फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज इज बीइंग आस्क्ड, लेट अस सपोज ये पेपर 1 में पूछा जा रहा है, तो वी शुड नॉट राइट बेसिक GS टाइप आंसर्स फॉर क्लाइमेट चेंज. वी शुड गो फॉर ए केस स्टडी. फॉर एग्जाम्पल वी कैन गो फॉर दिस साहेल रीजन इन अफ्रीका. तो उसका छोटा सा मैप बना के, ये साहेल रीजन है. अब इधर मैं छोटी सी कुछ, यहाँ पे सूडान रीजन है, यहाँ पे शड है, यहाँ पे नाइजीरिया है, घाना है, अगर थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा. जस्ट दीज नेम्स आप स्कैटरली उसके ऊपर स्कैटर कर दोगे. इट शोज़ कि आपको रीजनल नॉलेज है हल्की सी. और फिर आप बात करोगे कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो सॉइल डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन वो क्रीप कर रही है साउथवर्ड्स, उसकी वजह से कल्चरल कितना हार्म है, कन्फ्लिक्ट्स हैं. ये अगेन ह्यूमन एलिमेंट और फिजियोग्राफिक एलिमेंट को लिंक कर रहा है. तो ज्योग्राफी इज़ अबाउट शोइंग ए पर्टिकुलर रीजन एंड हाउ मैन हैज़ अडेप्टेड इन दैट रीजन. उसके क्या इकोनॉमी है, क्या ऑक्यूपेशन है. ये छोटी छोटी सी एग्जांपल्स, इससे आपके मार्क्स मतलब एक्सपोनेंशियली राइज करेंगे. तो ज्योग्राफी इस सेंस में डिस्क्रिप्टिव हो जाती है जब मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स, छोटे केस स्टडीज़ देता हूँ. और पेपर 1 में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए विद डायग्राम्स. पेपर 1 इज़ अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डायग्राम्स और केस स्टडी जहाँ पर रिक्वायर्ड है. पेपर 2 इज़ अबाउट केस स्टडीज़, रीजनल मैप्स, रीजनल स्टडीज़, और अगर कोई डेटा कोट कर सकते हैं तो इट इज़ गुड, इट विल हेल्प. तो बेसिक क्योंकि मेरा फर्स्ट मेंस और सेकंड मेंस में नॉलेज बेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, एंड द ओनली डिफरेंस वाज हाउ आई डिड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर दैट. तो एंड दिस गोज फॉर एनी ऑप्शनल विच आई फेल्ट कि once you get to know the essence of your optional, try to show that, not inorganically write those words, but try to show that yes, this person has shown, for example in geography it shows some kind of regional synthesis. और जो पेपर 2 में जैसे ये एंट्रीज हैं, जैसे सिटीज़ की नेम्स हैं, अभी तो मुझे भूल गए हैं कुछ, बट स्टिल द बेस्ट सोर्स फॉर दिस इज़ व्हेन वी प्रिपेयर फॉर मैप एंट्रीज ऑफ पेपर 2 क्वेश्चन 1. उसमें मैप एंट्रीज पूछी जाती हैं हमसे. तो जो स्टैटिक मैप एंट्रीज हैं दैट कैन हेल्प. फॉर एग्जांपल अगर वी हैव दिस ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, समथिंग लाइक दैट इन राजस्थान, विच एम्स एट इरिगेटिंग
दिस ईस्टर्न साइड ऑफ अरावलीज, तो वहाँ पे चंबल रीजन है, चंबल बेसिन है। अब यहाँ पे शिवपुर मुरैना है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर भरतपुर है, झालावाड़ है, भिंद्रा कुछ है, कुछ जो भी है। तो दीज जब इस तरह से एक मैप बन जाता है और इसकी जो सिटीज़ हैं स्मॉल स्मॉल प्लॉट कर देते हो, आप एक रीजनल पिक्चर दे रहे हो वहाँ पे। और छोटी मोटी जैसे अरावलीज यहाँ शो कर देंगे, यहाँ पे चंबल रिवर है, यहाँ पर चंबल बैटलैंड्स है, अगर लिख देते हैं तो एंड यू हैव ऑल दिस नॉलेज। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं वी हैव ऑल दिस नॉलेज, तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि यू नीड टू कंस्ट्रक्ट केस स्टडीज समटाइम्स। आप हर वक्त केस स्टडीज़ याद नहीं कर सकते हैं, आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर दो। अब जैसे ये चंबल बैटलैंड एक ऐसी टोपोग्राफी है जो हर ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट पढ़ता है, तो उसके छोटे छोटे रीजन्स हैं, ग्वालियर है, मुरैना है, झांसी है इस तरफ। अगर मैं ये शो कर दूं, क्योंकि इसमें बुंदेलखंड रीजन भी आ जाता है, तो और बुंदेलखंड लिख देता हूँ, तो बुंदेलखंड इज़ नोन फॉर इट्स ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड बट नाउ वी हैव लाइक ड्रॉट्स एज वेल। तो वो चीज़ जब उस आंसर में शो होती है और उसको लिंक करते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट के साथ, तो वी विन इन ज्योग्राफी इन दैट केस। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग आई कुड शेयर अबाउट ज्योग्राफी। और syllabus, like the notes and all, what I did was Shabir sir's, I had attended Shabir sir's classes on that, and his notes and his references to books, that he teaches books as well. And for books you should do selective reading, and for example go for, in geomorphology we have this karst topography, then I will go for that topic directly in that book, read basic notes, class notes, and then go for that topic and read it selectively. और ये हर एक ऑप्शनल की रेफरेंस बुक के लिए लागू होता है। तो बुक से आप कॉम्प्लीमेंट करते हो अपने बेसिक नोट्स को और प्रैक्टिस करते हो इस तरह से आंसर राइटिंग, तो इट शुड वर्क। तो आई थिंक दिस इज़ बेसिक थिंग, एंड वी विल टेक क्वेश्चंस कलेक्टिवली। ठीक है, थैंक यू। सर मेरे 4 सवाल है, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। पहला मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को फाइनेंसेस का बहुत बर्डन होता है, मतलब फैमिली प्रेशर नहीं है, बट मेरे को लगता है ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था 2023 वाला, प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ, बट ये मेरे को बहुत बॉदर करता है कि इतने पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। मतलब मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे मैं कैसे निकलूँ सर? टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग, कि यार दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टेड, और देन यू वोंट वरी मच कि यार इतना पैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और वो एज एन इन्वेस्टमेंट, एनी एजुकेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट, और इवन इफ़ यू हैव टू स्पेंड ऑन अदर थिंग्स लाइक फूड हो गया, रहना हो गया, तो इवन दैट इज़ टू फैसिलिटेट योर वर्क। मेक श्योर कि दैट हैपन्स इन दैट वे, एंड देन यू विल गेट योर सेल्फ फ्री ऑफ दिस गिल्ट कि यार मैं इतना ज़्यादा खर्चा कर रही हूँ। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टमेंट वन शुड टेक इट। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2022, तो उसमें एज़ पर द कोचिंग मॉक टेस्ट मेरे को 74 आ रहे थे, तो मेरे को पता था कि प्रिपरेशन जिस लेवल की है उस हिसाब से 74 मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही वो बिल्ड किया, एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। फिर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मेरे को पता चला कि एक्चुअल एग्ज़ाम में मेरे को 47 आए, तो उसका असर इस बार के प्रीलिम्स में तो मेरे हिसाब से नहीं पड़ा था। मैंने अच्छे से दिया, मेरे को लगा इस बार क्लियर होगा मेरा 78 बन रहा था, बट कट ऑफ हायर साइड में गया, मेरा नहीं हुआ। तो सर मैं और कैसे इसको आगे ले जाऊँ? अभी एकदम ब्लैंक है दिमाग में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं एनालाइज किस पार्ट पे खुद को करूँ, ये कैसे एनालाइज करते हैं? और सपोज अगर मैंने टेस्ट, जैसे मैंने विजन का फुल एंड 35 टेस्ट दिया था, तो मेरे जो मार्क्स थे वो 30 to 90 के रेंज में थे। तो सपोज मेरे टेस्ट में 30 आए, तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन मेरे बेसिक से आ रहे हैं, ये मेरे गलत हो रहे हैं, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। मैंने उस पार्ट पे इम्प्रूव किया, लेकिन मैं इम्प्रूव कैसे करूँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर। आप लोगों ने कैसे किया? जैसे मैम आपने 2 प्रीलिम्स आपके पहले तो हो गए थे, फिर नहीं हुए, तो आपने उसमें कैसे इम्प्रूव किया? See, I'll tell you one thing, that take your both the prelims test जो UPSC वाले ना, sit with it, analyze कहाँ पे क्या गलती हुई, कौन सा क्वेश्चन you should have known, is identifying those questions because you have given 2 prelims, sufficient prepare किया होगा आपने, so अपने वही वाले UPSC के पेपर्स एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और ये गलत हो गया,
ये थोड़ी नॉलेज थी बट दैट इज़ वॉट आई थॉट वहाँ पर डिफरेंटली, इसलिए गलत हो गया. So you'll be able to identify, see if you're scoring 40, 50, 60, you'll be able to identify I think around 20 to 30 questions जिसकी आपको precursory knowledge थी and आप वो सही नहीं कर पाए. So that is what I did with my 2020 and 2021 prelims papers before this attempt. I made sure कि कौन से questions मुझे आते थे and फिर भी गलत हो गए. When you do that ना, your preparation in itself will start streamlining. कि अब जब आप जैसे आर्ट एंड कल्चर का अगर कोई क्वेश्चन गलत करके आए हो, जैसे आई रिमेंबर देयर वाज दिस क्वेश्चन इन 2021, कौन सी रिवर पे कौन सी सिटी है, ठीक है, एंड वो मेरा गलत हो गया एंड वो सच अ बेसिक क्वेश्चन, हाउ कुड आई हैव नॉट डन इट, मतलब मे बी द प्रेशर यू नो गॉट द बेटर ऑफ मी. तो वहाँ पर जाकर गलतियाँ नहीं करनी है, बस ये एनालाइज कर लो कि ये गलती ना यार होनी ही नहीं चाहिए थी, ये तो मुझे आता था. इफ़ यू आर फिगरिंग आउट दैट पोर्शन ना, चाहे वो मॉक में हो चाहे फाइनल एग्जाम के साथ हो, इवेंचुअली यू विल क्लियर. मेक श्योर कि वो गलती क्यों हो रही है ये एनालाइज करो, रादर देन यू नो रनिंग आफ्टर कि इतने मॉक टेस्ट लगा लिए. रन आफ्टर द फैक्ट कि ये वाला पॉलिटी का टेस्ट लगाया और पार्लियामेंट मैंने पढ़ा था या फंडामेंटल राइट्स मैंने पढ़ा था, बट फंडामेंटल राइट्स का इतना बेसिक क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया. तो वो वहाँ पर हाईलाइट करो. अपनी जो भी आप सीख रहे हो उस टेस्ट से, वो अपनी वही टेक्स्ट बुक में लिखिए. अलग से नोट्स टेस्ट के बनाना, 35 टेस्ट के नोट्स आप कभी भी रिवाइज नहीं करोगे. आई हैव डन इट एंड आई हैव नेवर रिवाइज्ड इट. सो व्हाट आई डिड इन दिस अटेम्प्ट वाज कि जो भी टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व करा एंड अगर उससे मुझे ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था और मैंने नया सीखा है, जैसे मान लो कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में कुछ नया सीखा है, वही लक्ष्मीकांत में आर्टिकल 21 के पास में लिख लो. सो इवेंचुअली यू आर revising that test when you're revising the text also. So analyze your papers before giving new test. Go back to the previous one, take a day, take 2 days, find कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, because no one will you know, मैं नहीं बता सकती, सर नहीं बता सकते, कोई कोचिंग भी नहीं बताएगा उतने अच्छे से जितना आप खुद को सिखा सकते हो. Rely on yourself and वो mistakes ढूंढिए, आपको मिल जाएंगी. Very easy to find them. And I think the score indicates that your revision of static is not well. And I would suggest कि static, you know what happened with me was after my first prelims, I kind of took it on myself कि यार ये हुआ नहीं. So I went all guns blazing for prelims. And it could not, मतलब prelims बच के जाएगा कहाँ पे. तो this should be your approach towards static syllabus. स्टैटिक इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अब स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब जो बेसिक है, यू विल सी कि योर मार्क्स विल इम्प्रूव अलॉट. यू विल नॉट मेक दोज मिस्टेक्स दैट यू आर सीइंग, लाइक मैम वाज आल्सो टेलिंग कि आप जैसे पॉलिटी में सामने क्वेश्चन आया है तो बट यू स्टिल अटेम्प्टेड इट रॉन्ग, तो वो नहीं होगा. स्टैटिक रिवाइज करो फास्ट. आई थिंक देयर इज वीकनेस ऑन दैट पार्ट. सर स्टैटिक स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि उस बुक से अगर क्वेश्चन आए तो वो मेरे गलत नहीं होने चाहिए, ये? हाँ, यही होता है. And I think conceptual clarity about it कि because see if you see UPSC previous year questions, they are asking very conceptual questions, शायद directly text से नहीं आ रहे हैं. So they ask what is constitutionalism, they ask, so it's a limited government. तो अब ये concept की बात है, कहीं शायद लक्ष्मीकांत में directly नहीं लिखा है. So whenever you are reading a term, make sure you understand what the term indicates. वो होती है conceptual clarity static portion की, कि टेक्स्ट तो आपको पता ही है बट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है और रिपब्लिक का क्या मतलब है, क्लासलेस सोसाइटी का क्या मतलब है, वो बेसिक आइडियाज़ जो है, फेडरलिज्म क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पूछेगा यूपीएससी एंड वो क्लियर नहीं है तो बड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, ए और बी बिल्कुल ही सेम लगता है, उल्टा ही लगा कर आना है. तो मेक श्योर कि आराम से यू रीड द टेक्स्ट. जो 7 या 8 प्रीलिम्स की बुक्स हैं, आई थिंक किसी भी टॉपर की वही प्रीलिम्स की बुक्स होती हैं एंड सही में 7 या 8 हैं. बहुत आराम से एक महीना लगा के भी पढ़ेंगे तब भी 8 महीने में हो जाएंगी. सो मेक श्योर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. और मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आइडियली जो ये टाइम है इसके लिए मेरे को अभी मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या वापस से मैं प्रीलिम्स पे लग जाऊँ, क्योंकि प्रीलिम्स ये तो नहीं हुआ. आई थिंक ये अप्रोच हमेशा इंटीग्रेटेड होनी चाहिए फॉर द इनिशियल मंथ्स. तो मेंस एंड प्रीलिम्स साथ ही चलता है एंड बिकॉज सी
प्रीलिम्स कैन बी प्रिपेयर्ड डेडिकेटेडली इन 3 to 4 months. उससे ज़्यादा आप भूल भी जाओगे. You can't mug up everything just right now and produce it in the exam. वो last 2-3 months में बहुत extensively रहता है. So right now I think you should keep it very integrated with mains. Start writing. उससे भी concepts clear होते हैं. And when the next prelims is on 26th May, so start preparing for maybe February, 1 month in advance than the regular people. So that will give you enough time to collaborate, whatever mistakes you have, वो identify कर लेना. But keep identifying your mistakes, analyze them. Thank you. बोलो. हेलो, यस सर. तो सर 2025 में एलिजिबल होऊंगा. तो सर अभी के करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर जो है, तो क्या मैं उसमें डेडिकेटली फोकस करूं कि या ना करूं? One thing I would advise is do your graduation in a best way possible. Graduation में जो आप what you are doing in graduation? सर Sociology honors. Yes sir. Okay. तो apart from sociology also they will be teaching history and polity also ना in graduation. तो वो आपको clear होना चाहिए पूरा, क्योंकि when you get here you will be studying that things only, those things only. तो वो graduation को सही से करना साथ में. And if you can develop a reading habit for newspaper, it will be very good. It will be very good for you in future also. Don't go for notes and all. कोई ज़रूरत नहीं है. Just read newspaper as a normal educated person reads. हाँ ठीक है, पढ़ा, आजकल ये चल रहा है दुनिया में, ऐसे बस ठीक है, बंद कर दिया. और सर ऐसे राइटिंग, सर ऐसे कैसे प्रिपेयर करें? Again, yeah, these are the things that you should not worry in the first year of your graduation. In my last year of my graduation, what I did was I started reading newspaper. क्या newspaper की habit तो डालूं? तो that was the last year of my 4-year graduation. तो yours might be 3 years graduation ना. तो I would suggest कि यार live happily. तो it would help. That is the best preparation for now. And essays and all, she should tell. I think for essays, one thing you can do is see what UPSC asks and read previous year question papers for 20-30 years. You'll identify certain themes के women पे पूछते हैं, development पे पूछते हैं, poverty पे पूछते हैं, then South Asia region पे पूछते हैं. उन themes के बारे में now because you are very young right now, I will say कि जब भी आप newspaper पढ़ रहे हो, try to just think about it. Don't stress too much. For those who are actually going to write the exam in the next year, I think you can prepare certain templates, just brainstorm those recurring themes from the essay papers, and उससे आपको काफ़ी ideas मिल जाएंगे कि कैसे approach करना है, कैसे topic को break करना है. Then again I think I say a lot, Anudeep sir's notes किसी भी topic की उठा लीजिए. Essay का template he has given very beautifully. You can read that template and precursory knowledge आपको उससे मिल जाएगी. मैम कोर्ट्स कैसे प्रिपेयर करें एथिक्स के लिए? Again for quotes for ethics, I'll say कि जो भी syllabus के terms हैं, pick out those terms, Google कर लीजिए. integrity पे quote, public life पे, should public and private life be different उस पे. So for every topic you'll have 1 or 2 quotes and that will suffice. मैम लास्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी का यूज़ के लिए. मैम फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत मैंने एक रीडिंग उसकी की है, तो क्या क्लास 11 की पॉलिटी और जैसे कि सभी लोग बोलते हैं टीचर्स की एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, तो क्या मुझे नीड है एनसीईआरटी? क्योंकि मैंने देखी है एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत रीडिंग करने के बाद, तो बहुत सी चीज़ें मुझे लक्ष्मीकांत से ही समझ आ गई हैं, तो एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन मुझे उतनी रिलेवेंट नहीं लगती फिर. See, this is totally a personal choice कि आपको NCERTs कहाँ पर और किसकी रीड करनी है. I think the only indispensable NCERT is for geography. उसका कोई alternate source नहीं है and it's the best source. उसके अलावा चाहे वो history की हो, चाहे polity की हो या social sciences की किसी को रीड करनी है, अगर basic understanding missing है, so you can go to NCERTs. वो एक base बन जाएगा and then read the standard text. If you're comfortable with the standard text, तो शायद NCERT skip भी की जा सकती है. So that's personally everyone's own choice.
You have so much time, na? The question she asked about constitutionalism. No, not that much this time. I'm saying time for preparation to appear before exam. So she talked about constitutionalism. It is mentioned in NCERT. So these questions are mentioned in NCERT. Lakshmikant doesn't talk about them. So NCERT is the most beautiful book. And for example, that Constitution at Work and Introduction to Politics, something like that, the two books hain. You see they have very less factual information as compared to Lakshmikant, but their conceptual understanding of constitutionalism, what it means to have a constitution, and in fact first past the post, it is a system of election. They talk about this. They talk about proportional representation. Lakshmikant doesn't talk about that in that much detail. So they are into that much foundation. So you have that much time, so you can obviously give a read, and just look at the way they have written. I cannot appreciate enough the way they have written NCERTs. So it helps. You have so much time, why not read NCERT? Okay sir, thank you ma'am. Anyone else? एक्चुअली सॉरी सर मेरे को, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ सर। वापस से सर आप मेरे को बाइफरकेट करके बता सकते हैं क्या GS 1 2 3 4 को कैसे पढ़े? लाइक सर एग्रीकल्चर कुछ पार्ट है सर, और ऐसा इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपने पढ़ा अलग से, बाकी चीज़ें तो आपने बताई सर कि मैंने स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करे, बट इन चीज़ों को आपने सर कैसे टैकल करा? आपको ऑप्शनल क्या है? सर सोशियोलॉजी सर। सोशियोलॉजी। जैसे आपके लिए सोसाइटी वाला पोर्शन इन GS 1, इट शुड बी मोर डूएबल फॉर यू बीइंग सोसाइटी। मतलब हालांकि वो बड़ा अलग तरह का होता है, बट स्टिल आपको उसमें मदद मिलती है। सेम गोज़ फॉर मी फॉर GS 3, क्योंकि वो जोग्राफी का बड़ा सारा ओवरलैप था। बट स्टिल एग्रीकल्चर फॉर जोग्राफी NCERT 11th and 12th. I think in 12th they talk about agriculture. India specific they talk about that. तो वहाँ से आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ोगे। जोग्राफी की NCERT 11th and 12th दोनों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसका जोग्राफी ऑप्शनल नहीं है। इनफैक्ट ऑप्शनल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट ये कि आपके लिए वही ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर को लेकर के। उसके अलावा जैसे अर्बन डेवलपमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, दीज आर द टॉपिक्स इन GS 3 विच आई कवर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर। Apart from that, again, urban development is also in geography. Then we have internal security topics that were covered in class notes. तो class notes में वो ये सब cover करते हैं, और वो basic जो static portion है, मतलब जैसे for internal security what you need to do, what are the basic challenges, for example इंडिया में है कि कश्मीर issue है, नॉर्थ ईस्ट में issue है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, then we have society level issues, communal harmony का issue है, diversity versus unity के issues हैं, फिर उसके बाद सेसेशनिज्म, रीजनलिज्म, पैरोकियलिज्म, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको उस मटेरियल में मिलेंगी, क्लास नोट्स के स्टैंडर्ड मटेरियल में मिलती हैं व्हेन इफ़ यू आर डूइंग सम कोचिंग। और अगर वो नहीं कर रहे हैं आप, तो देन यू कैन रेफर टू स्टैंडर्ड नोट्स फ्रॉम द मार्केट बेसिक स्टैटिक के लिए। उसके बाद व्हेन यू सॉल्व मेंस टेस्ट सीरीज ना, दे विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स, एंड इंटरनल सिक्योरिटी इज सो रिवॉर्डिंग टॉपिक. You have to read so little for that, and so many questions are bound to come from that. 4 questions at least they will ask, and they are so much scoring. और बेसिक आपको क्लियर हो और आप न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं उसके बारे में, और जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसमें वो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं इंटरनल सिक्योरिटी. तो इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दे विल बी कवर्ड इन टेस्ट सीरीज एज वेल. तो मेरे को वहाँ से बहुत हेल्प मिली थी, टेस्ट सीरीज और उसके अलावा न्यूज़पेपर. सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर ऐसा सभी बोलते हैं कि हमें मेंस के लिए, जैसे एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री है सर, तो हमें क्लास नोट्स और एक्सपेक्ट्रम पढ़ते हैं सर. उसके बाद वो लोग कहते हैं सर टॉपर्स की मेंस के लिए मैंने स्पेशली प्लासी टू पार्टीशन पढ़ा था, या हमारे सर. नहीं सर, सब नहीं करना है यार. स्टैंडर्ड बुक इफ़ यू हैव डन स्पेक्ट्रम एंड क्लास नोट्स दे आर मोर देन एनफ. उसके अलावा आप कोई मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो ऐड कर लो. डोंट गो फॉर दिस प्लासी व्लासी क्या है. Thank you sir. I'm sorry sir. नहीं, it's not to be sorry, but we have to be very selective in our material, study material. हेलो मैम, बेसिकली माय क्वेश्चन इज़ कि जैसे कि आपने बोला कि आपने 4th अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो तब तक आपके माइंड में एक बार भी ऐसा आया कि मेरे को प्लान बी को कंसीडर करना चाहिए और उसके लिए एक तरीके से करना चाहिए परस्यू? सी जब तक क्लियर होता है ना किसी के दिमाग में नहीं आता. सो फर्स्ट अटेम्प्ट वाज ऑल रोजेज, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस डिसेंट स्कोर था. देन
second में also I did not doubt myself that much, but honestly telling you that when I couldn't clear prelims in my third attempt, that's when I thought that I should have had a backup, because you know the nature of the exam, it's not about your intelligence. आप अपने दिल पे मत लो कि आपका नहीं निकल रहा है. It's such a difficult exam. It's you know, unpredictable in so many ways. This year they made CSAT unpredictable. I could have not cleared CSAT this year. So that's why I'm saying that you should have a secure backup. So when you're preparing, you don't get these doubts in your mind कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा, because when that doubts creep in, that leaves you worrying all the time about your, you know, financial security in the future, your independence, you think your prime years of the life are, you know, going in the exams. So have that backup. And after my third prelims, I gave certain exams, different exams from different fields I attended. I attempted certain state PSCs exams, certain MBA exams, and I could score decently. So that's why I became very chill that, you know, if I don't clear this, I'll, you know, go get an MBA degree or do my MTech. So keep those options open, and see, once I had that backup plan very sorted out, that's when I could even invest more in this attempt. So I think that is something that you take that pressure off your head. So yes, I would say that think about it. Don't let it affect your preparation that अब तो बैकअप ही है तो वही कर लेंगे plan B. If you are preparing, prepare dedicatedly, but have a certain threshold for yourself also. There's a limit to how much pressure, even as we humans very differently take pressure. So आपका pressure लेने का और मेरा pressure लेने का threshold बहुत different होगा. So have your limits and don't take it too hard. You know, if you are not clearing the exam, I'll say that उस time पे वो having a backup helps. Suppose we give 2-3 attempts and then we started facing like financial stability भी होनी चाहिए, दोस्त आगे निकल गए हैं, करियर नहीं कर रहे हैं हम कुछ भी, मतलब कोई जॉब अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली एट द सेम टाइम जैसे हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम जॉब नहीं कर रहे होते हैं साइड बाय साइड, क्योंकि पूरी प्रिपरेशन इधर चली जाती है, सारा फोकस और अटेंशन इधर चली जाती है. तो हमारा मतलब लाइक प्लान भी होना क्या चाहिए अगर कोई फर्दर स्टडीज़ परस्यू नहीं करना चाहता उस केस में? Plan B will be totally up to you, what interests you after the exam. I have different friends who were preparing for me who couldn't clear. Some joined the private sector, some cleared state PSC exams, some went for an MBA and then, you know, they got their higher education and are doing very good. And others started, they are having their own startups now. So it's up to you what interests you. I was planning on doing my master's in public administration if I couldn't clear the exam and take up a teaching job somewhere as a professor. So that was my vision if I couldn't clear the exam. So because that used to interest me. So I cannot decide what a backup should be for you. You think about what is your educational background and what you want in life, and somewhere where the two, you know, could overlap. That can be your backup after civils or, you know, beyond this journey. God forbid you don't clear, if anyone does not clear. मैम वन क्वेश्चन, द थिंग इज़ कि जब भी हम मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं तो जनरली यार या तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, कभी हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी इसमें चला जाता है कि ठीक है इसे हम बाद में देख लेंगे. बट मोस्टली ऐसा होता है कि हम 2 ऑप्शंस में या 3 ऑप्शंस में फंसते हैं कि 2 में मार्क करें या 3 में मार्क करें. अब जनरली ये बोला जाता है कि अगर तुमने मतलब वो लो हैंगिंग फ्रूट्स कर लिए जो तुम्हें शॉर्ट आते थे तो उसके बाद आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए जनरली हम 2 और 3 में फंस रहे हैं, तो उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए? See, very mathematically speaking तो वो 1/2 probability ही है. No one can give you a short way कि यार B सही था या C सही था. But again I think apply all the common sense you have. मतलब कुछ बड़ा ही absurd सा है, so you can always eliminate that absurd thing ना, कि साइंस टेक का एप्लीकेशन तो हर जगह हो सकता है. They are saying कि इस फील्ड में नहीं हो सकता, तो maybe it's very absurd. So try and eliminate those absurdities जो UPSC, you know, will always throw in one such statement जो आप pick कर सकते हो. तो I think common sense can help you get more questions right rather than just standard text or something.
like you should be able to utilize all your knowledge at that point of time. It is very what she said, no, all of your common sense as a person, all entire all of me does all of this जनरल like that. अवेयरनेस अबाउट थिंग्स कि यार ये शायद कहीं सुना था कि सीसीटीवी ये होता है या यू नो वेब ये होता है, बहुत बेसिक सी चीज़ें काफ़ी बार. सो देयर वाज दिस क्वेश्चन इन 2020 ऑन वर्टिकल फार्मिंग. सो तब तक वर्टिकल फार्मिंग किसी ने नहीं सुना था, बट इफ़ यू गो आउट मेट्रो स्टेशन के पिलर्स पे वो फूल लगे होते हैं, दैट इज़ वर्टिकल फार्मिंग. सो such a common sense question. If you just think वहाँ पर, it's just about keeping yourself calm and thinking paper में. So this was one thing I figured out later when I was, you know, analyzing my exam कि vertical farming तो गलत नहीं होना चाहिए. That was all about common sense. Sir, I wanted to ask about the geography optional. So can you just briefly tell me about the book list for paper 1? What I said was basic notes were Shabir sir's class notes, and in class also he has given us a book list, and in fact उन्होंने markings भी करवाई हैं class में कि this portion you should read from this book and all. उसमें जो basic most prominent book series हैं वो सविंद्र सिंह है. सविंद्र सिंह on geomorphology, on climatology, on oceanography, biogeography, environment geography for part 1, paper 1 part 1, वो सविंद्र सिंह की सीरीज़ हैं सारी. उसके बाद फॉर पेपर 1 पार्ट 2 फॉर जियोग्राफिकल थॉट इट इज़ दिस आर.डी. दीक्षित एंड सुदीप्ता चटर्जी आई थिंक. तो आर.डी. दीक्षित, yes, in R.D. Dixit, do selective reading. For example, when you read the syllabus, that is the words which are written on geographical thought, उस टॉपिक को डायरेक्टली बुक में देखो. और व्हेन यू विल रीड दैट टॉपिक ना, यू विल गेट टू नो कि मुझे इससे पहले एक टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, जहाँ फिर मैं डायरेक्ट ये पढ़ रहा हूँ तो ठीक है. क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इफ़ आई वुड से क्लासिकल फेज ऑफ ज्योग्राफी दैट वाज अंडर दिस हम्बोल्ट एंड रिटर. उससे पहले, अब मैं जब क्लासिकल फेज इन ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो उससे पहले का मेरे को थोड़ा आइडिया होना चाहिए प्री क्लासिकल फेज. तो दैट वाज अबाउट कांत एंड एक दो और थे उसमें. उससे पहले इट वाज वरेनियस व्हेन ही टॉक्ड अबाउट. तो जब मैं टॉपिक पढ़ूंगा ना क्लासिकल फेज इन ज्योग्राफी, तो आई वुड हैव दिस सर्च कि यार उससे पहले का फेज क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि उस सिलेबस में मेंशन है. आप सिलेक्टिव रीडिंग करो, मगर उसके लिए बुक ये है. और उसके अलावा दिस इज़ वन मेड सिंपल की बुक्स आती हैं, मेड इजी आई गेस, मेड रूपा मेड सिंपल, हाँ, रूपा पब्लिकेशंस. तो उसका इन फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज ह्यूमन ज्योग्राफी 2 बुक्स हैं. फिजिकल ज्योग्राफी में सॉइल्स वाला चैप्टर है, उसको पूरा ही पढ़ना है. फिर प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है. फिर अडेप्टेशंस वाला चैप्टर है एक. फिर एक एवोल्यूशन पे भी है छोटा सा चैप्टर, जस्ट टू गेट द जिस्ट ऑफ व्हाट दे आर आस्किंग. क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे बायोजियोग्राफी में एड्रेस होते हैं. उसमें अडेप्टेशंस हैं, ह्यूमन अडेप्टेशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एनिमल है, वो टॉपिक्स हैं. तो इससे वो, और जो ह्यूमन ज्योग्राफी का है उसमें एक आप पढ़ सकते हो मॉडल्स, अर्बन डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, जैसे हाँ क्या कहते हैं, क्रिस्टॉलर्स थ्योरी है, एग्लोमरेशन ऑफ लॉश है. उसके बाद बेसिक वेबर की भी उसमें मॉडल्स हैं, वेबर का जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन था. और एक दो और हैं यार, मेरे को भूल भी गया. तो उसमें ये सब टॉपिक्स हैं, आप उनको सिलेक्टिवली रीड करोगे. उसके अलावा माजिद हुसैन है, माजिद हुसैन के भी सिलेक्टिव टॉपिक्स रीड करने हैं. उसमें अगेन मॉडल्स वाला चैप्टर है जो आप वहाँ से पढ़ सकते हो. और फिर उसमें ये जो पॉपुलेशन वाले चैप्टर्स हैं उसमें डेटा है, जैसे सेक्स रेशो क्या है इंडिया का, डिफरेंट का. फिर उसके बाद जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है उसको माजिद हुसैन से करना है. मतलब जो पॉपुलेशन थ्योरीज हैं अलग अलग, वो सारी माजिद हुसैन से की जा सकती हैं, अच्छी हैं उसमें. और पेपर 1 में सविंद्र सिंह से ही मतलब करना है, पी दयाल, DS लाल करने आई हैवंट रेड यार. इवन सविंद्र सिंह इज टू मच टू रीड. तो बेसिक क्लास नोट्स हैं और फिर सविंद्र सिंह है फॉर एनी रेफरेंस. और यही है. और पेपर 2 में खुलर इज़ द टेक्स्ट बुक फॉर ज्योग्राफी. और ट्राई टू लर्न, जैसे खुलर में इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस की बात होती है, जब they talk about for example the regional approach that I was telling, they will make a small map of Jamshedpur
and how Jamshedpur as a city is connected to its regions. For example, they have Tata, they have iron and steel plants. तो ore कहाँ से आता है, electricity, coal कहाँ से आता है, ये सब आप अगर मैप में शो करोगे तो it is hardcore geography. There can be nothing more geographical than this. तो खुल्लर is so beautiful in that. है बहुत बड़ी मोटी बुक है, सारी नहीं पढ़नी है, टॉपिक्स उसमें एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ लो आप, इंडस्ट्रियल रीजन्स का टॉपिक पढ़ लो, फिर सॉइल्स ऑफ इंडिया उसमें भी है, और रॉक्स, फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया जो फर्स्ट टॉपिक है पेपर 2 का, वो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो ये बेसिक बुक्स हैं, यही बुक्स हैं. और सर पेपर 2 में सर आपने हर एक क्वेश्चन में मैपिंग की थी, रीजनल मैपिंग? नहीं, दिस इज़ वन ऑफ द मिथ्स दैट आई हैव टू ब्रेक, कि आपको हर ज्योग्राफी के हर क्वेश्चन में मैप बनाना है. दिस इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी. आई हैव गॉट 293 एंड आई डिड नॉट मेक मैप्स इन ऑल द क्वेश्चंस, एंड इन फैक्ट आई डिड नॉट वेंट फॉर जियोग्राफिकल जार्गन एज वेल. कहते हैं ना कि यार जियोग्राफिकल टर्म्स डालो, कुछ ऐसा डालो, वो तब डालनी है जब वो नेचुरली आपके आंसर में आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर टू टॉक अबाउट एनवायरमेंट और लेट अस से स्लोप डेवलपमेंट मॉडल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब जब इसमें प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस अगर आ रहा है तो तब मैं डालूंगा, जहाँ फिर प्रिंसिपल ऑफ स्लोप इक्विलिब्रियम आ रहा है तो मैं डालूंगा. मतलब समझ रहे हो आप, नॉट नेसेसरीली कि मतलब जानबूझ करके रहा है, वो बनावटी होता है, वो नज़र आ जाता है उसको एग्जामिनर को, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करता है. तो मैप की नेसेसिटी मेरे को तो नहीं लगी, और रीजनल मैप आपके आंसर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कोई ऐसी केस स्टडी है जिसमें रीजनल मैप चाहिए तो ज़रूर बनाओ उसमें. अगर कोई ऐसी केस, फॉर एग्जांपल लेट अस से एनवायरनमेंट पे केस स्टडी है एंड दे आर अबाउट टू दे वांट टू टॉक अबाउट दिस मैडन जूलियन ऑसिलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट. अब मैं किस रीजन का बनाऊंगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैप नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ उसके बेसिक डिटेल्स ही लिखूंगा. तो यहाँ हर जगह मैप की ज़रूरत नहीं है. Yes, sir. और सर, was there any scope of innovation in paper 1, or you just went through the stages and models जो दिए हुए हैं, या फिर कुछ इनोवेशन भी था? रिवीजन, फिर से वही रिवीजन किया था, सेम सिलेबस, उसी पे 114 मिला था और उसी पे 142. और उसका रीज़न ये था कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी सेकंड में, एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और ये जीएस वाली आंसर राइटिंग थी, तो वो आपको ऑप्शनल में भी हेल्प करती है. और ब्रेक कर लेना पार्ट्स को और एक एक पार्ट को एड्रेस करना है. और ज्योग्राफी में एक सबसे अच्छी बात है सब्सटेंशिएशन. इफ़ यू कैन सब्सटेंशिएट विद एन एग्जाम्पल, कोई रीजनल एग्जाम्पल लिख ही दोगे तो वो भी पेपर 2 में बहुत हेल्पफुल होती है, पेपर 1 में बहुत हेल्पफुल होती है. ओके सर, एंड लास्टली, इज देयर एनी टेलीग्राम चैनल ऑफ योर्स जिस पे आप कुछ अपलोड करने वाले हो? या फिर मैंने यार कहीं भी, मेरे एक्चुअल में ज्योग्राफी के नोट्स ऐसे कंपाइल्ड नोट्स नहीं है, सर के क्लास नोट्स हैं, उसके बाद में रेफरेंसेस हैं. यहाँ से मैंने वो बस पेज नंबर लिखा है बुक का कि फ्रॉम दिस पेज नंबर ये, तो जब मैं ही खोलता हूँ उस बुक को तो मुझे ही दिखता है वो. समझ रहे हो उस चीज़ को, मतलब दिस इज़ वेरी पेक्यूलियर अबाउट योर नोट्स. तो ज्योग्राफी के उस तरह के नोट्स नहीं हैं. और जहाँ तक मुझे लगता है शबीर सर के नोट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, और तो इसलिए उसमें तो ऐसा नहीं है. बट वन थिंग आई कैन सजेस्ट यू, दिस यशार्थ शेखर सर हैं, ही वॉज रैंक 12 आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट ईयर. उनका एक वीडियो है ऑन यूट्यूब, ही वॉज मैंशनिंग अबाउट ऑप्शनल ओनली, तो वो मैंने भी देखा था, तो उससे भी मेरे को थोड़ा आइडिया मिला था कि हाउ टू गो रीजनल इन अप्रोच. एंड बेसिक आइडिया यही है, आप रीजनल मैप बनाओ. और जो ये मैप एंट्रीज का मैंने बताया था ना कि जो पेपर 2 का जो क्वेश्चन 1 होता है उसके आप स्टैटिक मैप एंट्रीज भी प्रिपेयर करते हो, तो उनको इस्तेमाल करो आपके आंसर्स में. जैसे अब यू कैन गिव मी एनी रीजन ऑफ इंडिया, आई विल हैव फ्यू सिटीज़ टू नेम देयर. तो जब मैं ऐसी सिटीज़ डालता हूँ तो इट शोज़ कि यू हैव नॉलेज ऑफ दैट रीजन. तो यू डोंट नीड टू राइट. अब हम इसको लिख भी सकते हैं कि दिस इन सेंट्रल इंडिया दिस रीजन, फॉर एग्जांपल छिंदवाड़ा सियोनी रीजन, बालाघाट रीजन, वी हैव जिंक ओर्स और कॉपर ओर्स. तो बट अगेन अगर मैं इसको मैप में शो कर दूंगा, छोटा सा बना दूंगा, साइड पे पन्ना बना दूंगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ पे वो बना देंगे क्या कहते हैं मैकाला माउंटेन रेंज है, अचानक मारा अमरकंटक है, ऐसे ऐसे छोटा छोटा से लिख दूंगा तो इट शोज़ ज्योग्राफी. तो वो आप कर लो, वो इन दैट वे योर पेपर 2 आंसर्स विल बी वेरी गुड. ओके, थैंक यू सर. Ma'am, sir, how to do note making on every topic of main syllabus? See, firstly, note making will not come very naturally with the first reading. So the notes that I used in this attempt
were prepared after very extensive reading, and eventually, you know, this was my fourth attempt, so I knew what they are asking. But still, if I'll give you some pointers regarding note making, one thing I used to always keep in mind is कि मुझे कोई भी topic पे 15 marker से ज़्यादा का question नहीं आएगा. So effectively, 2 A4 sheets will suffice a topic. So if you are preparing, for example, for RPA Act, which is a topic in GS2, prepare 2 pages of notes. And what should be the content? That can be driven from what previous year questions are asking. So usually in RPA, they'll ask कि disqualification के क्या sections हैं, RPA क्यों आया, या फिर आज RPA में क्या issues हैं, या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूछेंगे, ये शुड इट बी स्टैट्यूटरी और नॉट. तो वो वाले थीम्स अगर आपके दिमाग में होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, देन अगेन वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स. ट्राई टू एलिमिनेट द ऑब्वियस आउट ऑफ नोट मेकिंग. keep it around those keywords that you'll directly write in the answers. So again, if you're preparing for supposingly you're preparing for society, so सेक्युलरिज्म पे, कम्युनलिज्म पे या अर्बनाइजेशन पे, अगेन 2 pages of notes are more than enough. So for that, I think you can refer Kanish Kataria sir's notes, so you'll get a basic idea of how he has done note making. And I tried to, copy his art of note making, and that helped me making small notes with the eliminating the obvious, and always, refer previous year question before you are studying any topic. So that will restrict the amount of clutter that we generally tend to make while reading something. For example, if you are reading land reforms in India, तो कितना land reforms के बारे में कितना पढ़ना चाहिए? It's such an extensive topic. You don't have to read everything. उतना पढ़ो जितना UPSC पूछता है और आगे बढ़ जाओ. I think I answered your question. Yes, ma'am. Sir. Yes, same for notes making. One thing that she said, go for that topic and see. You can one thing you can do. Although I did for limited portion only. What I did was topic of UPSC and questions that were asked from that topic. उससे आपको idea मिल जाएगी कि ये range है for past 5, 6, 7 years. तो उनका compiled form होगा. तो you will get the idea कि ये notes हैं, ऐसे करना है. तो then you prepare your notes accordingly. और notes आप बनाएंगे standard book material से. Standard जो है for example for history standard books, for polity standard लक्ष्मीकांत, और उसके अलावा जो dynamic notes होते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे सोसाइटी हो गया ये सब, तो इसके नोट्स आप अगेन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग वो आपको पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल इन आवर एग्जाम इट वाज सेक्ट्स वर आस्क्ड दैट देयर आर वेरियस सेक्ट्स इन इंडियन सोसाइटी एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस. तो अब दिस इज नॉट समथिंग वी कैन प्रिपेयर, बट दिस इज समथिंग यू कैन नाउ प्रिपेयर फॉर दैट कि दे आर आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. तो ये आप न्यूज़पेपर से ले सकते हैं. अब न्यूज़पेपर से कैसे लेंगे कि यू शुड रीड अबाउट दिस. आपने ऐसे क्वेश्चंस कंपाइल कर रखे हैं और आपको आइडिया है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप जब भी कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके बैक ऑफ द माइंड आपके होता है कि यार इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो यू विल गेट टू नो कि हाँ ये टॉपिक सही है, ये डाल सकते. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर्स, देयर लॉट ऑफ टॉपिक्स रिपोर्ट्स ऑन ट्रांसजेंडर्स एंड देयर राइट्स. तो ये हमारे सोसाइटी वाले पोर्शन में कवर भी होता है, तो आप वहाँ से उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक क्लास नोट्स. और हिस्ट्री के आई विल शेयर सम ऑफ द नोट्स विद यू कि दिस इज हाउ आई मेड सम नोट्स. मतलब नोट्स क्या है, नोट्स वन थिंग अबाउट नोट्स इज नोट्स इन देमसेल्व्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. नोट मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जब मैं अपने नोट्स बनाता हूँ तो उस समय, एंड सेम गोज़ फॉर कि फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाते हैं, सेकेंड और थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बनाते हो किसी भी स्टैंडर्ड मटेरियल से. तो वो जो स्टैंडर्ड मटेरियल है उसको आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रहे होते हो. तो जब आप उसको फिर से उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करोगे जो आपने खुद बनाए हैं, तो वो आपको पूरी बेसिक मटेरियल रिवाइज हो जाता है उसमें. तो नोट्स उसी वे में बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, बट नोट्स जो खुद के बनाए हुए हैं. और पिक्टोग्राफिक माइंड मैप टाइप ऑफ थिंग वो सही रहती है. कोई ऐसे डायग्राम बना दिया, स्पोक एंड व्हील होता है ना, हब एंड स्पोक मॉडल, कोई ऐसे फ्लो चार्ट फॉर्म में उस तरह से बना सकते हो. Is there is a need to make notes for prelims? Yes. There is no other answer than that. Notes is for your preparation. Notes
आप जब प्रीलिम्स के पहले होता क्या है कि यू हैव टू रिवाइज अ लॉट ऑफ सिलेबस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो इन दैट मोमेंट नोट्स आर द मोस्ट इफेक्टिव थिंग, एंड स्पेशली नोट्स इन हिस्ट्री. मतलब आई फाइंड दोज वेरी इफेक्टिव, and entire history is revised just because of small, for example, this R.S. Sharma, I have made a note for every one A4 sheet for every chapter. तो जब उसको मैं पढ़ता हूँ, इनफैक्ट आई हैवंट रेड R.S. Sharma for 2 years now. It was only the first year work that was done. अब मैं उसके नोट्स पढ़ता हूँ, entire story आपके माइंड में रिवाइज हो जाती है. तो it helps a lot. Notes. Okay, sir. Thank you. Hello. So my question is for you. Like, what is the role of coaching in geography optional, which is having a lengthier syllabus and along with required synthesis of the subject? Sir, what is the role of coaching in it? You see, coaching term, we actually use a lot of this term, but we don't realize that coaching actually happens or not. What happens is teaching. तो coaching में एक डायरेक्शन देता है टीचर आपको कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसका एक नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है दैट ही हैज़ सीन, और उसको पता होता है कि मतलब आप देन यू हैव टू हैव फेथ इन योर टीचर एज वेल. व्हेन ही सेज कि दिस इज़ द टॉपिक, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, वी शुड डू दिस, वी शुड स्ट्रेस मोर ऑन दिस टॉपिक. और किसी टॉपिक पे कहाँ तक पढ़ना है वो भी आपको वहाँ से हेल्प मिलती है. व्हेन आई सेड टू हिम लाइक द अदर गाय, ही वाज आस्किंग कि जब सेलेक्टिव रीडिंग करनी है किसी बुक की, तो यू आर नॉट वेरी अवेयर कि यार कहाँ तक सेलेक्टिव रीडिंग है और कहाँ तक नहीं है. तो उस सेंस में अगेन टीचर हेल्प्स यू, ए कोचिंग पर्सन हेल्प्स यू अ लॉट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन इट विदाउट कोचिंग एज वेल, क्योंकि सिलेबस वेल डिफाइंड है, गिवन है सब कुछ, और टॉपर्स की वीडियोज़ भी हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स भी सबको पता है. तो पीपल डू फ्रॉम दैट एज वेल. बट आई वुड से कोचिंग हेल्प्स अ लॉट. एंड if someone is not able to do it, then it cannot be blamed entirely on coaching. Why entirely? It cannot be blamed on them that it was their fault or not. What they do, they deliver some services. It is up to us what use we make out of that. So if you can make out of coaching best, then it will help a lot. I personally would say, and it was decided, in fact I had not much background in this, and there is no one in our family from that. तो उनको पता नहीं है इसके बारे में कुछ. तो द ओनली सोर्स फॉर मी वाज कोचिंग एंड टीचर्स हु हैव बीन इन द मार्केट फॉर सो मेनी ईयर्स. तो it helps. Continuation to my first question, sir, nowadays every lecture is available in Telegram itself. Sir, which one is highly preferable, to go to offline center or do it online? Yeah, agar if that works now, that is very helpful. I think we should not be discussing that, but if it is helpful, why not? Who is stopping you? Study material is so beyond any IPR rights. It is available here, so why not make use of that? If you feel कि I am performing well in that, and it is helping me a lot, then it will help. One can go with that also, with those channels and those classes, recorded sessions. And sir, one is my personal one. Sir, while dealing with geography, like particularly physical geography, sometimes I found it like difficult to do with this, continue with this. So there's a dilemma in my mind that whether I have to choose another option or not. So how to deal with this? Same goes for plan B also. One thing I would say, you can have plan B, you can have some another option also. But when I am doing that, then do that with full dedication. When I'm doing one thing. And we should be mature enough to differentiate these two things. When I'm doing plan A, I should not be thinking about plan B. Then obviously you are not dedicated. You see, textbook definition of dedication is my willingness to put all my resources, time at stake or as a means to get to some objective. So when I am already distracted with some another optional or with some another plan B, then I'm not giving it full. And there was one scene from movie, if you can relate to that, it is that Batman trilogy, the end scene when Christian Bale jumps out of that well. Have you seen? So in that he jumps, like initial all attempts he makes with a harness. The harness is tied to his waist. He jumps and he couldn't get to a place wherever he wants to climb. But in the end he leaves that harness and he jumps, and it is called a leap of faith. So it is something that you have to have faith in some subject or in some plan A.
then you have to commit yourself fully to that and then work in that direction. So it should not, it will help in some or other way, it will work. But still, if you have plan B, you see, you make, objective assessment about that. If you want to change, you can change. And one story, and one, I think I should share it. This fourth year UPSC CSE exam I had filled with philosophy as optional, and I had prepared for philosophy. So the reason for that was, while preparing for mains, since I have got 211 in geography, so I was very much disheartened, and I had so much knowledge in geography at that point of time. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा. But still, this year I have to do with this, और मैंने भरा ही है तो करना तो है ही. तो I had to give full attempt in this exam only, and after that I will change. So you see, I was already having this thought of another subject, but at that moment you have to work with that what you have. So what you have decided, you have to stand by your decision. तो I would say कि अभी अगर आपने वो किया तो आप वही करो ना, पूरा डेडिकेटली वही करना है. और फिर जब फिर से नेक्स्ट जंक्चर आएगा, फॉर एग्जाम्पल, have you chosen your optional? Actually, sir, I did my graduation from DU itself in geography. Okay. But 2 years of my graduation is in COVID. So in DU, we don't have any examination for such that. Okay. And we are actually reading while giving examination. So I haven't studied that much of core syllabus of geography. But I'm familiar with the names like Bernard Berenius, Ritter, Hartson, and everyone. So that's the familiarity in the name. That's why I was but I want to study history. Okay. I love reading history. And how much time have you been in preparation? So like 7 months I did a coaching. Okay. So you have not yet completely decided on optional then? So I was confused because of first once I decided to complete the GS syllabus, then after I realized at the end. You see, sir, there are certain parameters about optional which I think you should consider. First is your interest. It is very important whether you have interest in that. Second is how much good study material is available, good coaching is available in that subject or not. This is very important. Test series, good test series are available or not. This is important. Third is this overlap with other subjects, which I considered for geography. Well, whether it will be helping me in GS or not, it is also one of the factors. Then the faculty availability. Apart from that, the best thing is then that is on your interest only now, whether you will continue or not. You consider all these factors and see whether I can do or not. And also one thing, you can see the trend of marks as particular subject is getting. So it is sometimes it is indicative of that thing, whether it will be useful or not. But for example, but it is not true for my case only. In geography we have so many they are not giving that much marks, but this year I got 290 plus. So I cannot be very sure of this as a factor, but this is also one of the factors. So you consider that. And one thing, let me tell you, geography is very vast. It will require a lot of your time, lot of your mains preparation will be into geography only, and but it rewards well. It rewards very well. So this is kind of trade-off. Hi sir, hi ma'am. Congratulate you first to your success for UPSC journey. Thank you. So, I want a question, sir, for consistency, sir. Many times I consistency break in week and day. Suppose I target, I don't break my consistency for a 1 week. After 1 week I break for my some rituals of my clothes, daily rituals for. So how you maintain your consistency in the UPSC? Ma'am first, then I will tell you. So I think थोड़ा discipline तो खुद से ही आना चाहिए. See, there is no elixir to consistency that every one of us has sacrificed a lot. Every day we have sacrificed going on social meets with our friends, we have sacrificed family functions just to sit and study in the library or at our places. There is a certain amount of isolation involved with the process, but I think
constant rejuvenation helps you to keep yourself consistent in the coming days. So after every 15 days, you take a 1-day break, or after 7 days, you take half a day break, and then again on the next 6 days, you study properly. So I think on the 5th day when you want to break that consistency, you know, a break is coming just 2 days from now. So let me just study. So I think I used to follow this approach. This can help, but definitely I'd say खुद को तो करना ही पड़ेगा. There is no alternate to it. No one is going to do it for you. You'll have to, prioritize what is important for you. If your studies are important vis-a-vis the other thing that you are considering, please sit and study, because effectively you will be paying for the next 1 year if you don't clear prelims or mains. And as each attempt passes, the mental pressure increases, because your age is going up, you have family obligations. So try to do it then and there. एक बार में करो, फिर party ही party करना. What's the harm about it? Be consistent, take short breaks, try to be systematic with things. So I think sir can add something. The discipline part is a given part for this preparation, and one thing is we get to see and we get to be very conscious about what others are doing while we are preparing. The one thing for that is stand by your decision, and this is something that I decided to come here. Like, this was what I used to think, and it was out of my own will that I presented myself to suffer, and I should suffer. So this is one kind of attitude, and it is that I should stay disciplined to my decision. That is one thing. Second thing is about taking breaks. Obviously we are humans and we cannot act like machines. और जब कभी हमें फील होता है कि मेरी एफिशिएंसी कम है, या फिर मैं बस बैठा ही हूँ, कुछ हो रहा नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है. तो you have to do is you can take a small break, or you can take a break for a day as well. What I used to do, I used to visit राष्ट्रपति भवन. बाहर से देख के आ जाते थे. It filled with you are filled with inspiration, क्योंकि that is the center of executive power in India, and you are working for that. You are working to get into those and act for the country. और उसके अलावा anyhow ऐसे भी वो माहौल अच्छा है, तो एक small walk ठीक रहती है. अकेले में you can spend some time alone. Or one thing is, when I say कि you can take a break, try to avoid breaking with friends. Friends help very much, they will help and you will get help from them. But sometimes एक अकेला खुद का break ज़रूरी होता है. उसमें आप brainstorming ही कर रहे होते हो. और कई बार हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हमें क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों जा रहा हूँ. तो जब मैं अकेले बैठ करके सोचता हूँ, और why I joined this, why I came here, what were my, और एक और थिंग कि what are the things which are at stake for me. Everyone has a different things. और मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरे पेरेंट्स का क्या सेक्रीफाइस है इसके ऊपर, how much money am I putting into this, how much, not just money, time, life. This is one of the most precious years that we have as humans, and so much youth is getting into it. So it brings a sense of accountability in you, कि I should be accountable to my actions. So you will gather yourself and work again and start working in that direction. मगर still आप break ले सकते हो, 1 दिन का 2 दिन का बीच में break ले सकते हो. That break should be rejuvenating. It should not be very distracting break. Or when I am preparing, I signed up for this. Stand by yourself. Sir, and one thing that sir, suppose जैसे मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि CSAT है, पता है ये कि बहुत सारा अभी टफ हो गया, तो बहुत सारा CSAT पढ़ना है. फिर उसके बाद जैसे अब कोचिंग 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो अब पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और सब पढ़ना है. लेकिन सब पढ़ना है तो इसमें टाइम मैनेजमेंट जो बहुत बड़ा की फैक्टर है कि हाउ यू टाइम मैनेजमेंट. एंड माय ऑप्शनल सब्जेक्ट इज मैथ्स. सो मैथ्स इज़ अनलिमिटेड टाइम. कि गेन मतलब कितना भी टाइम दे दो ये कम पड़ता है इसके लिए. तो एक तो ये भी है. तो सर इस टाइम मैनेजमेंट तो मतलब किस तरह से अपने टाइम को डिवाइड करें कि इस बार अगले अटेम्प्ट में टैकल कर पाए थोड़ा.
like ma'am said na, you can have sittings of 3 hours. क्योंकि they are very optimum sittings given as per the time schedule of UPSC exam. So we can work in that, and even scientifically also we cannot sit very beyond very मतलब 3 or 4 hours and with same concentration. तो इस तरह की छोटी छोटी जो आपकी स्टडी वो है ना मतलब सिटिंग्स हैं वो बनाओ आप. एक सुबह हो जाए अगर. वन थिंग इज देयर, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ वी वेक अप अर्ली. आई डिड नॉट वेक अप अर्ली वेरी मतलब कॉमनली, बट स्टिल इट इज़ वेरी हेल्पफुल. आपके पास पूरा दिन होता है, तो आप अगर जल्दी सो जाएं अगर रात को, तो यू कैन वेक अप अर्ली इन दैट. उसमें आप स्लॉट्स बना सकते हो, इवन इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और समटाइम्स ये सूटेबल नहीं होता है सुबह जल्दी उठना हमारे लिए, तो वी कैन हैव दोज टाइम पीरियड्स जस्ट एडजस्टेड अवे. तो सुबह में हो जाएगा, दोपहर में हो जाएगा और शाम को हो जाएगा. मतलब दिस इज ऑल एंटायरली ऑन यू यार. और व्हेन यू आर फुल टाइम इन प्रिपरेशन ना, देन ऑलमोस्ट एंटायर डे इज प्रिपरेशन ओनली. तो उसमें फिर टाइम क्या ही बनाना है, एंटायर डे है ही सारा वही ही कर रहे हैं. बीच में ब्रेक्स ले लिए थोड़े बहुत, तो 3 आवर्स हो गया, 3 आवर्स एट मैक्स, उसके बाद आप ब्रेक्स ले सकते हो. और वन थिंग इज अबाउट GS, योर अप्रोच शुड बी लाइक 2-3 टॉपिक कर लिए. जैसे मान लो पॉलिटी के 5-6 चैप्टर्स पढ़ लिए स्टार्टिंग में, जैसे कुछ एग्जीक्यूटिव है, स्टेट सेंटर रिलेशंस हैं, जो मतलब ऐसे बिग बिग चंक्स हैं वो पढ़ लिए. और फिर उसके बाद पॉलिटी चेंज कर ली, कोई और सब्जेक्ट पकड़ लिया, और साथ साथ में आपका ऑप्शनल कंटिन्यूस है. समझ रहे हो, इस तरह से अब किया जा सकता है ये. तो दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. इट इज़ एंटायरली अप टू यू कि हाउ टू ब्रेक दैट टाइम एंड डिवाइड दैट टाइम ऑन टू सब्जेक्ट्स. और सर जैसे कि मतलब पर डे का जो रूटीन है, तो जैसे कि आपका मतलब रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए या फिर मतलब गेन करना ज़्यादा होना चाहिए? रिवीजन इज़ मतलब उसके लिए प्री रेक्विजिट गेन है. पहले गेन होना था तो ही रिवीजन होगा, और गेन उतना ही करना है जितना रिक्वायर्ड है. और जब एक बार आपने बेसिक मिनिमम गेन कर लिया है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो सारे ही बोलते हैं वो पढ़ ली हैं, स्टैंडर्ड जो जैसे GS के चैप्टर मतलब सिलेबस इतना वेल डिफाइंड है, वो आपने स्टैंडर्ड पढ़ लिया, फिर उसके बाद रिवीजन ही करना है. फिर डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा सोर्स. ओके सर, थैंक यू मैम. तो ठीक है. गुड आफ्टरनून सर. मेरा क्वेश्चन है सर कि हाउ वी शुड मेक डेली और वीकली मंथली प्लान एज सिलेबस इज सो वास्ट. मतलब बहुत बड़ा सा सिलेबस है, और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे तोड़कर उसको कवर किया जाए. अगेन यार, आई विल हैव टू रिमेंबर द इनिशियल ईयर. और वन थिंग इट इज़ कि इवन इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल ईयर्स ना, the effort you put in first year, it is the most defining effort for your preparation. और सबसे ज़्यादा इंटेंसिव काम आपका फर्स्ट ईयर में होना चाहिए. यू आर टेकिंग कोचिंग, यू आर डूइंग योर ओन रीडिंग, यू आर मतलब रीडिंग न्यूज़पेपर एज वेल एज यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ इन दिस रीजन. तो मेरा जो फर्स्ट ईयर था बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली मतलब हार्ड वर्क था, एक तरह से ऐसे ड्रेजरी सी थी, बट स्टिल वो फाउंडेशन है आगे वाले ईयर्स का. तो जो फर्स्ट ईयर में what I used to do was, जैसे कोचिंग क्लासेस तो होती हैं, तो उसमें आप क्लास में समझिए पढ़ा क्या रहा है टीचर, और अटेंटिव लिसनिंग इन क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर उसके बाद अगर आपको वो रिवाइज़ कर सकते हो तो ठीक है, रिवाइज़ कर लो. कई बार होता है क्या है कि 2-3 क्लासेस का पेंडिंग हो जाता है, तो वो भी मतलब मैनेजेबल है. आपको कई बार 2-3 क्लासेस रिवाइज़ करनी पड़ती हैं, बट आप साथ साथ में स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ो, और स्टैंडर्ड बुक्स के टारगेट्स रख सकते हो आप. और जैसे इकोनॉमी है, पॉलिटी है, और जो थोड़ी मतलब जस्ट 1 रीड है, 1-2 रीड्स हैं, वो वाली बुक्स आप ख़त्म कर लो NCERTs की. उनमें ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं, लगना चाहिए भी नहीं. उसके बाद जो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, इन बुक्स को कंप्लीट करो. एंड ट्राई टू गो, जैसे हिस्ट्री है तो उसको एरा वाइज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री है तो आई विल गो विद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड how Europeans entered into India, and after that जो Bipin Chandra talks about establishment, how they created, how the different services they formed, administrative structure that they formed. ये एक चंक है, इसको ख़त्म कर दिया. फिर उसके बाद हो सकता है मैं ज्योग्राफी पे जाऊँ, तो मतलब ऐसे 5-6 दिन एक के ऊपर, फिर नेक्स्ट 5-6 दिन किसी एक के ऊपर, ताकि आपका वो भी रहे, थोड़ा चेंज भी होता रहे और थोड़ा कंटिन्यूटी भी रहे टॉपिक्स में. आप एक साथ में एक गो में स्टार्टिंग में पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते,
तो डाइवर्स रहना चाहिए उसमें, मतलब दिस इज़ वन अप्रोच दैट यू कैन बिगिन विद. तो ठीक है, एनीवन एल्स? नोट्स ना, नोट्स. I brought these notes because I thought कि I should let you know कि notes making why it is important. So I think do they have access to screen? I can show from here. You see, अब इसमें क्या है कि this is the economic impact of British rule, and these notes were as per the chapters of Bipin Chandra. तो ये बिपिन चंद्रा के notes हैं. तो I made small heading in this, and then I made different arrows. तो अब इससे पहले क्या है कि फर्स्ट आई रेड द एंटायर चैप्टर, उसको एक थोड़ा सा जस्ट ले लिया, देन अगेन आई रेड इट, एंड इन द थर्ड रीडिंग आई वेंट फॉर द नोट्स. तो वहाँ तक मुझे पता चल जाता है कि हाउ ही हैज़ स्ट्रक्चर्ड हिज चैप्टर. तो उन्होंने स्ट्रक्चर कैसे किया, उनका बेसिक टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, देन वन ऑफ द टॉपिक्स इज डिसरप्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमी, देन उसकी फर्दर टॉपिक्स हैं एंड हाउ इट वेंट. फिर नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न, ऐसे नहीं है, ऐसे disruption of traditional economy, then is impoverishment of peasantry, how it led to like the curse of landlordism and all that happened, and how the rates of land were increasing, and how owners were converted into tenants and then later into debtors. Then third impact is this chronology that I've made, na 1 2 3 4 5 6 and 7. This is based on the chapter's flow. What I had decided was कि when Bipin Chandra is writing that chapter, and he is obviously very aware of what should come first and what should come later. तो I depended on that. उसी के हिसाब से chronology बना ली. और बड़े चैप्टर को जब एक holistic view मिल जाता है कि ओके ठीक है, in this chapter he is talking about economic impacts only. अब economic impact on peasantry, different sections की बात कर रहा है वो, तो उसके भी हिसाब से notes बना लिए और उसमें छोटी छोटी details add कर दी. तो this was very helpful for me because Bipin Chandra it is sufficient for modern, though it doesn't have that much factual information. You can complement that information from other sources like mocks and certain notes, class notes as well. But the kind of understanding that he presents of modern India, that is so good. तो वो जब आप इस तरह से notes बना लेते हो और इसमें एक pictographic way होता है, आप arrow से show कर देते हो, तो it helps a lot. मतलब this is one of the notes, ठीक है. And similarly what I did for ancient history also, in that I also plotted it on a map. तो उससे क्या help मिलती है, you see, आप past year question paper भी देखते रहा करो बीच बीच में कि क्या पूछा है उन्होंने, उससे आपको आइडिया होता है. जैसे एक हम्पी का क्वेश्चन था कि on the which rivers bank it is situated, तो it is along तुंगभद्रा river. तो जब आपको वो मैप माइंड में हो, जब आपने देखा कि ये हम्पी रीजन है, तो ट्राई टू प्लॉट इट ऑन मैप एज वेल. और ये एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारी हेल्प करता है ये. जैसे बड़े सारे क्वेश्चंस ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन और बेस्ड ऑन मैपिंग ओनली, तो वो आप अगर डायरेक्टली जब आप पढ़ रहे हो तभी मैप पे प्लॉट कर लोगे तो इट विल हेल्प. तो एक छोटा सा मैप उसके साथ अटैच कर दिया था मैंने. तो इस तरह से हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे. इसके अलावा जो नोट्स हैं, पॉलिटी के नोट्स हैं ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसकी डिटेल्स की कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसी होती हैं, छोटी छोटी डिटेल्स बना लें. मगर बेसिक आप बनाओगे ऐसे सर्कल कर लोगे, जैसे बीच में फंडामेंटल राइट्स और उनके डिफरेंट राइट्स को एरोज के साथ शो कर दोगे. इससे क्या होता है, जब व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग इट और व्हेन एवर यू विल बी थिंकिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो आपके माइंड में वो पिक्चर आएगी. एंड A3 साइज हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि ज़्यादा डेटा एक फ़ोटो में आ जाता है. एक माइंड जो फोटो है उसमें एक ज़्यादा डेटा आ जाता है, और इट हेल्प्स इन रिवीजन एंड रिकॉलिंग एज वेल. आपको याद होता है कि नहीं इस साइड पे 6 पॉइंट्स थे, इस साइड पे 6 पॉइंट्स थे, तो कौन कौन से पॉइंट्स थे वो आपको याद हो जाते हैं. तो इन दैट सेंस नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई होप इट हेल्प्स. Anyone else? Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. As we all know that newspaper reading and analyzing it is an important part of our journey. But I feel difficulty in reading newspaper, and I'm not keen to read newspaper much. How you both did in your preparation? Let me tell you. During college time, I did not study much on this, and I enjoyed college very thoroughly. But
in the last year I was ki I should try a habit for reading, to develop a habit for reading newspapers. So I used to read certain answers on Quora and certain toppers answers, something as such, and their strategies. So in that, one person had used that the term that he said ki I used to read newspaper religiously. So that term stuck with me, ki the kind of dedication that he had towards reading newspaper. And I directly developed that into me, and I started reading in newspapers. और शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता है, इकोनॉमी वाला तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि वो क्या क्या रहा है. एंड इवन जो ये है एडिटोरियल्स हैं, हिंदू खासकर, उसकी इतनी टफ लैंग्वेज है, आदमी खो जाता है उसके वर्ड्स में. जब तक मैं आधे में पहुंचता हूँ पता नहीं चलता यार पहले क्या बना था क्या हुआ. बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क विथ. 3-4 महीने बाद यू विल बिगिन टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. And if it doesn't work, na, you should go for Indian Express. It is so good. It is very good. I got to read Indian Express during interview time. So I realized कि it is so much relevant to our preparation. Indian Express. वो शायद बैठ करके ही decide कर रहे हैं कि हमें UPSC वालों को भी देना है paper. They are doing that much. But still, in the beginning phase, you can do is you can look up for मीनिंग्स ऑफ सर्टन वर्ड्स. और हर एक न्यूज़पेपर के वर्ड्स ना, वो एक सर्टन सेट ऑफ वर्ड्स है, वो रिपीट करता है उसको. यू विल कम टू नो कि यार ये सिमिलर सा उनका सेंटेंस मेकिंग है, सिमिलर सी उनकी एक वर्ड्स हैं और ऐसे यूज़ करते हैं ये. दैट इज़ वेरी मच विजिबल इन एडिटोरियल्स एज वेल. अब होता क्या है कि ये जो एडिटोरियल जो आता है आर्टिकल, इट इज़ एक्चुअली रिटन बाय द पर्सन, देन इट इज़ एडिटेड बाय द एडिटर. तो लैंग्वेज ऑफ एडिटर ऑल्सो क्रीप्स इन टू दिस. तो वो रिपीट होती है. तो कुछ वर्ड्स एक बार वोकैबुलरी डेवलप हो जाए फिर समझ आने लगता है, और ये थोड़ा सा टाइम लगता है. बट इनिशियली एफर्ट थोड़ा सा डालना है उसमें, एंड इट विल रिटर्न, मतलब इट गिव्स वेरी गुड रिटर्न्स रीडिंग न्यूज़पेपर. आई फेल्ट सो. क्योंकि मतलब देन यू विल हैव टू कॉम्प्लीमेंट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो आई कुड गेट दैट फ्रॉम न्यूज़पेपर. तो दैट आई फेल्ट कि यार इट गुड फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग. You suggest something to make it interesting to read newspaper. See, I've read newspaper in the very initial stages because again, I did not have a habit. But over the years, I feel that input-output is a little not up to what I feel should be there. So I used to read the headlines. Then I followed Indian Express. So the explain section is very good. You know, you should read explain, you know, irrespective of what you are doing, preparing or not preparing for civils. It's such a good lucid explanation of the current topics that are going on, and questions do come from the explain section, and it's very interesting also. You know, you get the history and the overall understanding of the topic. So the main problem that we face while starting to read newspaper, that we don't get what the topic is telling. So that issue can be solved when you read the explain section. So I think you can begin with that. Just read the headlines and 1 or 2 editorials, and over the time you can develop it. And see, it's very important to read the paper, especially when you come for the interviews. 3-4 hours of current affairs reading is very, very normal when you're preparing for the interview. We used to read, I think he must have also done it, I used to read the Indian Express to full, then all the editorials. There is a compilation of editorial that used to come. Used to read almost 20-30 editorials per day. Then online news channels, I used to follow Vantage, if he must have followed the same, or Cut the Clutter with Shekhar Gupta. So all of this, you know, it's very important for the preparation. There is no escape around it. The more you accept that, the more you'll, you know, be able to do it. So start with the explain section if it's very tedious right now, and the headlines, and then go your way up the ladder. That is something I can suggest. And about making it interesting is you follow international relations. वो interest जगा देते हैं आपका ना. You are very much into so much involved into geopolitics and all. And one thing I would say is, but still stay relevant to your preparation. वो भी ज़रूरी है. I never prepared for international relations after that. In the first year, I prepared for static portion of that. For example, there are some static issues, West Asia, India, South Asia, like what is our Act East policy, neighborhood first policy, and Indian Ocean region. And then we have Western, this Europe, and all these are very static portions.
आफ्टर दैट आई रेफर टू न्यूज़पेपर ओनली. तो उससे इंटरेस्ट भी जगता है आपका कि अभी क्या हो रहा है. तो इट वॉज कंडीशन लाइक कि यार जब भी न्यूज़पेपर आता आई यूज टू ओपन द वर्ल्ड पेज फर्स्ट कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है. तो आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ यूएस व्हेन इट हैपेंड. तो इट जनरेट्स इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर एंड यू विल हैव सो मच नॉलेज अबाउट IR. वो आपको हेल्प करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार पहले आता था, अभी शायद उन्होंने बंद कर दिया. देयर आर कार्टून्स दैट आर, तो आई यूज टू रीड देम एज वेल यार. वो कभी आप 4-5 आर्टिकल पढ़ लो, कभी कार्टून भी पढ़ लो. तो इट वॉज वेरी लाइक शी सेड ना, फॉर मी इट वॉज ए हैबिट एंड इट वॉज बियॉन्ड प्रिपरेशन एज वेल फॉर मी रीडिंग न्यूज़पेपर. तो it and I made it interesting by reading sometimes certain articles which are for entertainment, not for the preparation only. So but still stick to what is important and entertainment, not like यार यहाँ पे इतने मरे इतने 4 वहाँ मरे, not like. So entertainment like कि for example sometimes there is article on food cuisines. On Sunday paper we have certain articles. We have articles on environment. We have articles on architecture. तो they are so good. Or sometimes people write memoirs, छोटे छोटे memoirs लिखे होते हैं उन्होंने. उस तरह का आप अगर रीडिंग को थोड़ा डाइवर्स कर लो तो न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हो जाता है. हालांकि ये टाइम लेता है एंड इट वॉज वेरी पर्सनल डिसीजन फॉर मी, बट स्टिल यू शुड ट्राई टू रीड विच इज़ रेलिवेंट. तो आई थिंक thank you for listening us.